Namaskar, welcome to Navabima's podcast. So today we are continuing our series on Hindu sociology, and today we are reading the part three of the book reading session we are having, the positive background of Hindu sociology. So today we are going to talk about a specific chapter in the topic, which deals with Sorokin's analysis and new Indology. So, as we had already discussed in our previous stream, Dr. Benoy Kumar Sarkar was a sociologist 100 years ago who wrote a very influential and very academically brilliant book on Hindu sociology. In the times at that time, the sociology was only concerned with the Eurocentric point of view of society as a whole. But Dr. Vinay Kumar Sarkar was the pioneer in Hindu sociology who fought the case to include the heritage of Hindu sociology as he wrote the textbook. So today we have Neener, our guest reader for today's session. So he will be reading the chapter on Eur-America, Sorokin's analysis, and new Indology. So before we start the reading session, I have this book today, which is as the highlight of the book. So this is India in the Age of Ideas by Sanjeev Sanyal. So this book is very close to my heart because it charts the journey of ideas which India has given to the whole world. And when we talk about the book by Dr. Vinay Kumar Sarkar, it was a revolutionary idea at that time to actually reintroduce to the world the faculty of Hindu sociology. So, as ideas go, this book by Mr. Sanjeev Sanyal gives a kind of introduction to ideas which transformed India over the ages, especially in the modern India, in economic policy front, in terms of social economy. So I would encourage people, if you want to know the ideas which influence Bharat and India as a whole, you can go ahead and buy the book. This is very reasonably priced, well written, easily understood by all ages, not very academic language, short chapters. So I would highly suggest people to go and buy this book. And to further not delay the thing, so do we have the guest reader ready to present the book, or else we would take some comments when Yes, the can you book see the is screen? ready. Let me put you on stage. Yeah. Audience, audio check. Is the text visible? Just let us know in the comments. Yeah. Jai Shri Ram, Sanatan, Jai Shri Ram, HV Didi. Yeah, I think the text is visible. So let's read it. Yeah, it is Yes. visible. Yeah. So I just want to point out which chapters we are going to focus on. We'll start off with this one in the middle. India affinities with Eur-America in Sorokin's analysis. And if we have time, then we'll continue with the next two. That is recognition of the positive background by Formichi, Bottazzi, Hillebrandt, Meyer, Breloe, and Keith. And finally, if we have again time, then we'll even do this last one, the new Indology in Liiders and found Glasenapp. So yeah, Sure. I'll That's begin with the that chapter. sounds interesting. I would Yes, request you if you could read little bit slower so that everybody can understand it. Okay. So yes, sure. yeah, thank you. Okay, so just as an introduction, who is Sorokin? So Sorokin is a Russian American who lived in a Russian who went to live in America. And he was a sociologist, and he worked on various topics where he studied on social stratification and cultural cycles. So, like how culture change is in cycles. He believed in the concept of cycles and that culture changes in cycles. And he also studied social stratification. So, he studied concepts like classes, castes, and all that. And he compared in various societies how it goes.
So yeah, with that background, I think we can begin the reading, right? No, Nina, do one thing. Uh, do you have internet? So just open up a web page and let's Yeah, give a biography of Sorokin before we read. So it will be good so we for can, okay. audience to know whom we are talking about. So this, yeah, very good. Go ahead. Just 1 second. So we have here this sociologist. His full name is You, Peterim could you Alexandrovich zoom in? Sorokin. Could you zoom in little bit? Zoom in. Could you just Um, increase zoom? I'm not sure. But let me try. Is it better now? Yeah, I think it's good. Yeah, go ahead. Maybe like this? Yeah, it's perfect. Go ahead. Yeah. So Peterim Alexandrovich Sorokin was a Russian-American sociologist and political activist who contributed to the social cycle theory. So he was professor at St. Petersburg Imperial University. He was repressed by Vladimir Lenin's communist regime, which led Sorokin to flee to Czechoslovakia with the help of Thomas Masaryk and Edward Bernays. He became later a professor of sociology at the University of Minnesota in 1924. In 1930, he was hired as head of the newly formed Department of Sociology at Harvard University. A member of the Socialist Revolutionary Party in Russia, he was arrested multiple times by both Tsarist regime, that is Tsars, and the communist regime when Lenin came. So yeah, he himself had quite an interesting life, and in that time he was also studying and writing on sociology. That's good. Okay, now we'll go back to our reading. Yes, you can see it, right? So you can, yeah, yeah, it's absolutely clear. So go ahead with your reading and just little bit slow down your pace, little bit, so will be good. Yeah, yeah. India's affinities, Eur-America in Sorokin's analysis. We may commence with Sorokin himself. In his sociological investigations, Indian facts and ideas occupy a prominent place. He may therefore be cited as an instance not only of the new logic but also of the new Indology. Comparative sociography furnishes the data of Sorokin's social mobility, published in New York 1927. In this work, the analogies, parallelisms, identities, and affinities between the facts, institutions, and movements of India and those of the rest of the world, which it was a special object of, the futurism of young Asia, to demonstrate, have been brought out in a conspicuous manner. The treatise does not deal with ideas, ideals, or theories, but with the actual processes of life as developed in the diverse regions and races of the world. So, in this last line, he is basically highlighting that he's not talking about merely ideas and ideals. He's actually concerned with the actual practical way of how things work. So that is the usefulness of his sociological work. Do you have any thoughts on this? Okay, so I think we just read one paragraph and then we can analyze it. Just read one or two paragraphs Okay, yeah, and yeah. A then, few more paragraphs I'll read. yeah. In the factual sociography of the world, Sorokin does not consider India to be sui generis. Sui generis means unique. So he considers India to be like the rest of the world. Interoccupational stratification is considered by him to be a social fact of the past and the present. While describing the superimposition of the caste occupational groups in the Hindu system, he points out that three of the eight guilds established by Numa, that is, Numa was the third, I think the second emperor of Rome, and Servius Tullius, who was, I think, sixth emperor of Rome. In ancient Rome, they had established eight guilds. Guilds means occupations which are hereditary, and they form like a union, you can say, and they work together and all that.
So he points out that three of the eight guilds established by Numa or Servius Tullius in ancient Rome were more important from the social standpoint than the others. Among the guilds of medieval Europe, there were some which were more privileged than the rest. The Six Corps of France and the Uh, Gilda. Nina, Nina, Yes, Nina, could you just zoom little bit more? Little bit more. I think 10% more. yeah, Zoom. Yeah. enough. Yeah. Go ahead. Okay. The Six Corps of France and the Gilda Mercantoria of England are instances in point. Among the occupational groups of the contemporary societies, also he finds, if not a juridical, at least a factual stratification. The rise and fall of groups, as distinguished from the rise and fall of individuals, is a form of social mobility in the vertical line. Indian sociography has arrested Sorokin's interest in this regard. The processes involved in this group mobility as manifest in the ascendancy of the Brahminical aristocracy are considered by him to be identical with those that led to the gradual rise of the Christian bishop, clergy, and the church as a whole after Constantine. The rise and fall of the French legists were, I think, lawyers and various other people who worked in law, as well as of the bourgeois and the royal aristocracies in Russia, Germany, and Austria, nay, the elevation of Russian communists after 1918 to the place occupied by the Tsarist aristocracy, all embody the principles underlying the growth of what may be called the Hindu Brahmanocracy. Nina, that's very interesting. Yes. Let's hold and let's discuss this specific. Yeah. What the author means by Brahmical aristocracy? What do you think? So, I so would he has think pointed. that, yeah, go ahead. Yeah, you can continue. No, yeah, first you go. Okay, so he has pointed out earlier that in Rome, out of the eight guilds, three were the most important. So, and similarly, he points out that some groups, some guilds are always more privileged than the rest. And same way, then he points out the example of Christian bishops, clergy, and the bourgeois in Russia, and the elevation of Russian communists. So, in the same way, he thinks that all these privileged upper groups, they are essentially they have the same principles that the Hindu Brahmanocracy has. You can elaborate. Hello, can you hear me? Yeah, I can hear you. Yeah, you can Yeah, continue go ahead. if you have any point. So I think what he seems to say is that this is not only the case in India, but in Europe as well. This formation, associating jobs by birth, had taken place, and eventually he tries to draw a parallel that in the Christian European nations, after Constantine, the bishops and the church, the clergy, they got a higher position. In a similar way, in India, that might have been the case. At least that's what he is trying to make a comparison with. Yeah. So unapologetic Hindu. So Can I you have a counterpoint to this. Yeah, Yeah. So when we say see caste as something which is uh, you can say it's occupation. So caste is not the right word because it comes from the Portuguese word. So the ideal translation would be correct occupation, and that occupational hierarchy in terms of somebody who is a Brahman, so he deals with knowledge. Somebody who is a cobbler, so he deals with handwork. Somebody who is an artist, somebody who is a businessman. So the Varna system is directly linked to
your ability to do specific kind of work, occupation. Yes. So in that sense, when the author is trying to equate the occupation and caste, it may be little bit misconstrued. Maybe at that time it was there, but from in my opinion, Varna system that we had was directly linked to the kind of occupations you had. And also in ancient times in Rome as well as in Europe, as in India itself. So occupation was something which was you can transcend. So somebody who was a farmer and they now able to gather land and they become Kshatriyas. So a lot of Kshatriyas that we see today as Kshatriya caste, they were actually not Kshatriyas but farmers. So this fluidity in terms of caste hierarchy, caste identification was very fluid in nature. So in that sense, Varna system is the right approach to actually approach this as occupation guilds, and nature of work. So your opinion on that? Okay. So my opinion is that when you are giving an example that a farmer occupies a bigger land, so I Hmm? think he would be technically under Vaishya rather than a Kshatriya, because like Kshatriya is more associated with the warrior fighting class that and who are taking part in either worked as soldiers or something like this. At least that's what I think Hmm. about it. That and regarding actually what I think is that all the three factors have certain effect, like birth, lineage, because lineage will have your occupation, which is karma will have, and your gunas will have as well. That is the qualities. All the three have certain effects. Like say, you will develop like take a blacksmith for an example. He knows the skills of blacksmithing. He will teach his children. His children will teach the next one. So in this way, I think we can see that process. In this way, it is a link to lineage. And regarding the change of Varna, I'm not sure, but yeah, it is possible because possible in the sense like you if yeah, because like I have seen I think I'm not sure about history, but in at least the text like Medhatiti says that even Shudras used to occupy lands like they were traders as well. So yeah. Hmm. So in your opinion, is Varna something which is fluid system? Like somebody could change his Varna and become Kshatriya or Vaishya or a Brahman. um Is that something which was so feasible or happening? actually you see, yeah, possible, maybe I'm not sure about it, but what I see is Actually, like uh, he will talk about this in going ahead, so we can continue reading. yeah, yeah, sure. Go ahead. Go ahead. Yeah, because he covers these topics as well in the next few pages. Yeah. So I'll continue. While establishing his thesis that there has scarcely been any society whose strata are absolutely closed, Sorokin brings into bold relief the facts of vertical social mobility even in the caste society of the Hindus. He quotes Manu and Gautama demonstrate that not only did the Brahmanas fall, but that the outcasts also rose. It is pointed out that in the seventh generation, as says Gautama, men may obtain a change of caste, either being raised to a higher or being degraded to a lower one. He admits that in vertical mobility, although less intensive, Indian history was but repeating the stories of Greece, Rome, Egypt, China, and medieval Europe. Benoy, According can to you pause for Sorokin, a second? yes, yes. Yeah. So that seventh generation word. So like I remember reading this verse. So what happens is that like the example I remember is that say you are a Kshatriya, you are a Kshatriya, you marry. I think it is for the male to like you marry a woman of a Brahmin, and then
your Yes. son might your son will again marry a Brahmin and continue to do that to seven generation. Then the Varna will change. That is, I think, what he is saying because I Yes. remember But this verse. yeah, so the Yeah, point of Sorokin, but that is that vertical mobility is obviously possible, though the conditions are so. possible. It's possible. Yeah, that is. Yeah, it's possible. Okay, so I'll continue. Yeah. According to Sorokin, in every country, the intensity of vertical social mobility fluctuates from period to period. India is no exception to the rule, which is illustrated by China, Greece, Rome, as well as medieval and modern Europe. In order to demonstrate the universal character of the social processes in India, he exhibits the epochs of caste rigidity as well as of caste decline as a series of social waves. In the discussion of the role of learning as a social elevator or ladder and of the educational institution as a channel of vertical circulation, India has her place by the side of China, Turkey, modern Western societies, etc. It is pointed out, however, that it is to the upper social strata only that education and initiation are confined, these being forbidden to the Shudras. Even in this item, Sorokin does not find India to be exceptional. Similar situations, says he, we find in some periods of the European societies also. He quotes the decree of Richard II in England to the effect that no bondman or bondwoman shall place their children at school as has been done so as to advance their children in the world. Among other channels of vertical circulation, he mentions the religious organizations of Buddhism and Hinduism similar to those of the Christian Church, Mohammedanism and Confucianism in their role as social ladders or elevators. In the field of successful money making as a social ladder, also, India has been cited for illustrations like other countries. Okay, According can to we discuss Sorokin, on it? Okay. yes, yes, Yeah, so can you go ahead? He tries to make a this one, comparison. Yeah, the Shudra one, that the Shudra kin was not allowed for the Vedas, right? Wait a second. right, The upper strata on the confined to the. So I have seen examples. I think even though you might not be a chatbot or anything, but I have seen like this thing that Shudra not going to school is lie because Shudras could go to school, but they would not be taught Vedas, except for that they were taught every other thing. That is best to my yes, knowledge they were taught because Puranas like and other yeah, they were texts. taught Puranas. And like people think that like Vedas have their own things, but what like Brahma Gyan, they could have been taught using the various Gitas. There are 25 plus Gitas, best to my knowledge. So they Absolutely, would have been taught that, and they would have been taught skills regarding to their professions, like say archery. They could like for not archery, like they could have been taught say if there is like what do you say carpenter, so carpentry skills could have been taught to him plus right, right. other skills because like even I think I have heard somewhere that there was a data somewhere from I think Madras presidency where they showed that the most of the students which used to go to school were Shudras and they were even Yes, faculty of Shudras. So I yeah, think that data is actually from Dharampal's book, The Beautiful Tree, as yeah. I recall. And even I think initiation being confined is not a universal thing Actually, we yeah, can say because yeah. This initiation thing is what I understand is that the Vedic tradition they had very strict rules that the upper V1, V2, V3, but the yes, tantric tradition initiations don't have, I think, that limitations.
Because I've Yeah, seen the tantrikas of Shaktas and Shaivas having that. So the initiation for Vedas might be, but for Tantras, I don't think that is the case. yeah. I guess it is Just, a. I think it's a generalization. We should point out yeah, that yeah, it's we should wrong. think it is a generalization. Yeah. Yeah, And can you go a little down? Yeah. And yeah. in fact, I think this regarding the successful in the field. So he tries to make, okay, a little downwards. Yeah. Other countries and social others. Okay. So we only Carry on. discussed till here. Continue. Yeah. Uh, Yeah. guests, so we have a request from the audience. If one of you can speak in Hindi, whoever is comfortable Okay. with. Yes, I can speak in Hindi. हाँ, तो आप हिंदी में बात कर लीजिए। निनर मुझे समझ में आती है, सो आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड हिंदी, तो ओके, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो आप हिंदी में मेरा बोलिएगा। मतलब हम्म, बिल्कुल, तो या मैंने गो अहेड। अभी नैना जी से बोला कि हम्म, उनने कहा कि ऊपर की जो शूद्र है या फिर शूद्र लोगों को गुरुकुल या फिर स्कूल नहीं जाने देते थे। मैंने इसका उसके ऊपर बोला कि शूद्र लोग स्कूल जा सकते थे, उनको वेद नहीं पढ़ाते थे, बाकी तो सारे शास्त्र खुले हुए थे, बाकी उनको अन्य विद्याएं सिखाई जाती थी, जैसे कला विद्या, फिर उसके बाद क्राफ्टमैनशिप, तो ऐसे बाकी चीजें सिखाते थे। फिर ब्रह्म विद्या के लिए उनको वेदों की जगह पे तंत्रों से सिखाते थे, विभिन्न गीताएं थी हमारे पास, तो उनसे उनको ब्रह्म विद्या सिखाई जाती थी। मैंने ये इस चीज के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। और हम लोगों ने आखिर में बोला कि जो हमारे पास डेटा है धर्मपाल जी की बुक से, द ब्यूटीफुल ट्री, कि शूद्र लोग स्कूल जाते थे। अब वो उनको वेद नहीं बाकी चीजें पढ़ाई जाती थी। चलिए। बिल्कुल, हाँ, इसमें मुझे एक बात कहनी है। जो मुझे लगता है कि आई शुड वॉइस दैट ओपिनियन बाय माई सेल्फ। ये जो बात है कि कुछ चीजें कुछ लोगों को नहीं पढ़ाई जाती थी, ये ऐसे लगता है कि ओके, ये बहुत ही खराब चीज है। पर अगर हम ध्यान से देखें और सोचें कि क्या हर व्यक्ति को हर चीज समझ में आती है? अगर कोई व्यक्ति फार्मर है, अगर उसको हम सिखाएंगे क्वांटम मैकेनिक्स, क्या उसको समझ में आएगी? शायद ना समझ में आए। तो नहीं हाँ। समझ तो में। इस ऐसा पे नहीं। और देखिए मैं एक एक और बात। जो गौतम हाँ, ऋषि का जो गौतम ऋषि का धर्म सूत्र है, उस पर लिखते हैं कि मतलब एक वेद को पढ़ने के 12 साल 12 इयर्स लगते हैं। ठीक है। ब्राह्मण दो वेद, तीन वेद, चार वेद अगर पढ़ेगा तो चारों वेद पढ़ने तो 48 इयर्स हो गए। तीन वेद पढ़ेंगे 36 इयर्स हो गए। दो वेद भी पढ़ोगे तो 24 इयर्स हो जाएंगे। और एक वेद पढ़े तो 12 साल हो जाएंगे। तो उन 12 साल में आपको अपने जीवन का भी क्योंकि ब्राह्मणों का तो मतलब ये था कि जहाँ तक समझ में आया उनको तो रिचुअल्स वगैरह करने होते थे, तो उनके लिए समझ में आती है बात। क्षत्रियों को धनुर्विद्या धनुर्वेद इत्यादि उपवेद वगैरह के लिए होगा। लेकिन शूद्र या फिर कोई और पढ़ रहा है तो वो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कोई चीज सीखे, इसलिए शायद एक कस्टम बन गया ओवर टाइम। आपका और हाँ, कुछ इस पे विचार है? करेक्ट, करेक्ट। सो या, तो मैं यही सोच रहा था कि अगर ऐसी कुछ चीजें बनी हुई थी जो ट्रेडिशंस थी, तो शायद उसमें कुछ कारण भी होंगे। मतलब ऐसे ही सुबह उठ के कोई ये नहीं करता है कि चलो तुम ये पढ़ना बंद कर दो। तो जो भी हम्म। चीजें हमारे समाज में है, उसके होने के कुछ कारण होते हैं। तो ऐसा नहीं है हाँ। कि बिना कारण से कोई चीज करता है। वो कारण अच्छे बुरे दोनों भी हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम्म। वो कारण आज भी जस्टिफाइड हो। लेकिन उस हाँ समय काल एग्जैक्टली। में जो ये उस नियम थे, समय शायद उसके कुछ कारण थे। हमें बहुत सी चीजें हम लोग ओवर सिंप्लीफाई करके दिखाते हैं कि ये तो देखो
ये तो फैसिस्ट है, ये तो ऐसा, ये तो तुम्हारे साथ शोषण किया गया। लेकिन हमको कभी कभी तो उनकी जगह पे खुद को ऐतिहासिक दृष्टि से देखना चाहिए कि वो क्यों हो रहा है, वो उनके परिप्रेक्ष्य में किस चीज के लिए, किस कारण से हो रहा है। तो उसके पीछे का अपन को कभी कभी कारण जानने चाहिए। हाँ, मतलब समय काल और परिस्थिति, ये दो चीजें बहुत अ, मायने रखती हैं कि ये घटना क्यों घट रही है। तो हम 2000 साल पुरानी जो घटनाएं हैं उसको आज से कंपेयर कर देते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं एग्जैक्टली। कि उस समय काल में जो परिस्थिति थी, जो लोग थे, उनके विचार थे, वो आज से मैच नहीं करते हैं। तो ये एक नहीं करें। fallacy, I'll say इस this is a fallacy of an argument where they are using illogical fallacies to actually prove something logical. So we will इस go ahead and read the next chapter, Nina. या Yes. So, according to Sorokin, all the mechanisms, the sieves by which individuals are socially tested, selected, and distributed amongst different social strata are to be found in this Indian social organization. We find that India does not present a peculiar case. The almost sacred character of the family was as much a dominant feature of India as of Greece, Rome, and medieval Europe down to the 14th century. The marriages in those societies were regulated by eugenic practices. In India, as elsewhere, the family served as a powerful testing and selecting agency. The functions of the school as a testing, selective, and distributive agency were as prominent in India and China as in the modern Euro-American societies. Incidentally, it is interesting to observe that according to Sorokin, the Brahmanas constituted the most powerful aristocracy of biological and social selection. In order to pass successfully the test of the Hindu educational institutions, the students had to display not only an ability to learn the Vedas, but extraordinary moral and social qualities. Only men with an extraordinary willpower and spirit, says he, could meet such a test. I'll continue. One of Sorokin's inductive generalizations in regard to the vitality and health of elites is as follows. The leaders and the higher classes of almost all societies seem to have been, on the average, superior physically to the lower classes. The care given to physical health in connection with the training of Indian Kshatriyas as well as Brahmanas was, according to him, a universal feature in the ancient world and is universal even today. If Sorokin's social mobility is a study in facts and realpolitik, his later work, Contemporary Sociological Theories, is, as the title indicates, a treatise dealing with ideology. In this work, also indological material has been introduced by the author at every important stage of his discussions bearing on the present day schools of sociology. He tries to exhibit the old Hindu thinkers as colleagues and comrades of the thinkers in ancient Eurasia, and all of them as precursors, suggestive or full fledged of the thinkers of the modern world. Yeah, if you have any thoughts, you can tell now. Yeah, we have one more guest speaker who has joined us on the screen. Abhay, you are audible? Hello, am I audible? Yeah, Abhay. Yes, you are audible. Yes, यस, यू आर ऑडिबल। हाँ, तो मैं यहाँ हिंदी साम्राज्यवाद फैलाने के लिए आया हूँ, बहिरागत हूँ। तो बिल्कुल, सभी को आपका नमस्कार, स्वागत है। सभी दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार। हाँ, सभी सुनने वाले, सभी देखने वालों को नमस्कार। हाँ, तो हाँ, वही अभी जातिवाद को लेकर बात चल रही है, तो मैंने कमेंट किया था जिस पर प्रश्न भी उठाया एचवी दीदी ने कि अब पेरेंट्स क्या तय करते हैं वो हम क्या उसका क्या करें। हो सकता है मुझसे भूल भी हो रही हो उनका प्रश्न समझने में, पर जैसा मैंने समझा मैं मानता हूँ कि
फिर भी वही समाज को वो स्वतंत्रता देनी पड़ेगी कि कोई कोई भी व्यवसाय करना चाहे उसको स्वतंत्रता मिले। पहले जो था वो किसी कारण से था, नहीं था, पर उसको कह दिया जाए यदि कि तुम शूद्र में जन्मे हो तो तुम वही काम करो जो शूद्र के लिए उपयुक्त है, वो आज के समय में तो नहीं चल सकता। तो वही मैं कहूँगा एचवी दीदी को, जिसको अ, पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार तो सभी को होना चाहिए, यही कहूँगा। हाँ जी, अभय, पढ़ाई तो लिखाई का अधिकार आपकी तो बात था ही से ना पहले से, क्योंकि आप देखिए हाँ ना, शूद्रों को भी स्कूल या फिर आप जिनको आप बोलते हो पाठशाला, वो वहां पे तो जाते थे नहीं, वो बात आपकी शिक्षा सही के है, रूप में। लिंग्विस्ट जी। मैं कह रहा हूँ वो वेदों को, वेद जो नहीं पढ़ने का आपने बात की थी। अब हम्म। मैं मानता हूँ आज के तो समय में आज यदि के समय में आप पढ़िए, आप इंटरनेट पे डाले हुए हैं, आपको किसी हाँ ने रोका हाँ है? नहीं नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आज कोई रोक रहा है, मैं कह रहा हूँ कि जो पहले रोका गया उसको उचित नहीं कहा जाना चाहिए, और वो कहीं पर यदि ये नहीं, वो विधि चल कि रही है पहले हमारे तो एंसेस्टर वो ऐसा नहीं करते होना थे, चाहिए। उसके पीछे का कारण ये था, आज के समय हमारी देशकाल परिस्थिति ऐसी है इसलिए हम ये काम करते हैं। ठीक है, अपन एक्नॉलेज करो कि हमारे एंसेस्टर्स ऐसा करते थे, लेकिन अभी क्योंकि हमारी देशकाल परिस्थिति वैसी नहीं है, इसलिए हम ऐसी थोड़ी हमने किया है, हमारे अनुसार चेंजेस किए हैं। हाँ, आपकी बात सच है, मैं सहमत। अभय, मेरा एक आपसे प्रश्न है। अ, मेरा प्रश्न ये है कि उस समय जो भी नियम कानून थे, ठीक है, वो उस समय काल के हिसाब से थे। तो आप उस नियम कानून को आज के समय काल में कैसे कंपेयर कर सकते हैं? आर यू नॉट कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस? क्वेश्चन टू नहीं, यू। मैं पूर्ण रूप से आपकी बात से सहमत नहीं हूँ भूपेंद्र भाई। क्यों मैं कह बिल्कुल रहा हूँ, बिल्कुल, क्योंकि बोलिए। देखिए, क्योंकि पहले नर बलि भी थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू समाज में सब जगह नर बलि होती थी, पर कुछ कुछ समाज में कई कई वर्गों में तो नर बलि भी नरबली थी। तो चलिए, उसमें नरबली तो पे अगर अपन बात कर रहे हैं, चलिए उसका Okay, we will आप speak. Okay, we will speak one by one. Let Abhay speak, then we will यस give a यस यस, count. No problem. Yeah, go ahead, Abhay. ठीक है, तो नर गो बलि अहेड। थी उस समय, नर बलि दिए जाने का कोई कारण रहा होगा, पर उस समय भी नर बलि दी जाती थी, वो उस समय में भी गलत था, ये भी हमें देखना चाहिए। नर बलि एक ऑब्जेक्टिव मोरालिटी होती है कि नैतिकता में एक वस्तुनिष्ठता भी होती है। हाँ, नैतिकता आपके लिए रिलेटिव भी होती है, सब्जेक्टिव भी होती है, पर एक ऑब्जेक्टिव मोरालिटी भी होती है, और मैं मानता हूँ कि कुछ चीजें गलत हुई, अभी हम उसको सुधार भी सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। और इसका मतलब ये भी नहीं होता कि जो कुछ पहले हुआ है वो सब कुछ गलत है, ऐसा भी नहीं है, हम बहुत कुछ अच्छी बातें भी देख सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ। चलिए, मैं बोलता हूँ कि आपने नरबली का बोला, तो नरबली तो जहाँ तक मेरा ज्ञान है, नरबली शायद बंगाल के एक एक बार एक दो कहीं कहीं के इलाकों में दी जाती थी। तो उसमें तो शायद मलेच्छों की बलि माता को चढ़ाई जाती थी, क्योंकि उस समय पे उनका युद्ध हो रहा होता था और वो मलेच्छों को बहुत निम्न समझते थे। मैं किन मलेच्छों की बात कर रहा हूँ, मैं नाम से तो नहीं बोलूंगा, आप समझ जाइए। तो मेरे को जहाँ तक ज्ञान है, वो उन्हीं के, मतलब बंगाल के कुछ कुछ क्षेत्रों में ऐसा होता था, बाकी तो। हाँ हाँ, एकदम आपकी बात है। आप और आगे कुछ बोल रहे थे, यदि मैंने आपको बीच में रोक दिया, पूरा नहीं, कर मैं ये लीजिए। बोल रहा था कि फिर उसके बाद देखिए, नरबली का जहाँ तक मेरे को, जहाँ तक समझ में आया कि नरबली तो उन मलेच्छों की दी जाती थी, क्योंकि उस समय पर उनका युद्ध वगैरह भी हो रहा होता था, तो उनके प्रिजनर्स हो गए, ऐसा मेरे को जहाँ तक ज्ञान है। हाँ, देखिए, मैं केवल भारत के संदर्भ में बात नहीं कर रहा था। जैसे दक्षिण हम्म। अमेरिकी संस्कृतियों में भी नरबलियों का और बहुत हाँ, यातना वो दे भी है। करके जो बलि दी गई थी, मैं उसका भी उदाहरण आपको दे दूं, तो वो उस समय भी उचित नहीं था। किसी की भी हाँ, बलि देना उचित नहीं है। एक हमें ये भी तय करना होगा कि कुछ बातें केवल समय पर और काल आधारित नहीं होती है, कुछ बातें सदैव के लिए ही अनुचित होती
ये भी हमें समझना, वही मैं कह रहा ये चीज तो सही नहीं है ना, क्योंकि देखिए अपन जैसे अगर कोई फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई कि केवल वेजिटेरियन खाना मिल रहा है हर जगह पे, फिर ये लोग पास्ट वो लोग अपन को है ना, पीछे के लोगों को देखें कि अरे ये लोग तो है ना जानवर खाते थे, ये लोगों के ऊपर तो मोरालिटी नहीं थी, तो क्या ये बात सही होगी? तो मेरे हिसाब से हूँ। मोरालिटी, नहीं, बोलो। सॉरी, आप पूरा कर लीजिए, मैं बार-बार बीच में बोलता था। बोलिए। नहीं, बोल लीजिए। मैंने एक एग्जांपल दिया कि फ्यूचर में लेट्स से एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई कि सारी जगह पे वेजिटेरियन खाना मिलता है, सब लोग वेजिटेरियन ही हैं, और उस समय पे है ना ये लोग इतिहास में पढ़ रहे कि हमारे जो पुराने लोग थे वो तो है ना मांस खाते थे। आज के लोग मांस खाते थे, जैसे 21वीं शताब्दी के लोग तो मांस खाते थे, कितने बुरे लोग थे। हाँ, तो आपकी ये बात सच है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें उनसे वो मॉरल स्टैंडर्ड्स एक्सपेक्ट करना चाहिए जो हमारा है। पर यस। मैं ये कह रहा हूँ कि उनके मॉरल स्टैंडर्ड्स आज की तुलना में नीचे थे और हमें उसको वही मानना चाहिए। मैं वो कह रहा हूँ और कुछ आ, अच्छा, तो हम एक we will go back to reading, but before go back to reading, just one point. The point is that when you are saying there is an absolute morality, okay, morality is an individual's choice and opinion, okay, based on the नहीं। overall larger landscape. The social morality develops via the individual's morality, and that individual demographic changes from time to time. So, in my opinion, you cannot have a absolute constant morality which is constant across the ages. That would not be possible because that is derived from the demographic which is residing at that specific point of time. So we will take up these questions maybe later in the series, and we'll go back to the reading. ओके, Yes. मेरे पास We इसका will, we उत्तर है, will, पर ठीक है, पढ़ लीजिए आप। we will talk about this at the end of the session when we have the audience reaction. So don't worry about ओके, ओके, कोई दिक्कत Okay, so I'll continue with reading. Along with ancient Greece, ancient India is referred to in connection with the early enunciations of the mechanistic school of sociology, the standpoint which interprets social phenomena in terms of physics, chemistry, etc. The materialistic atomism, I think he's talking about Vaisheshika of the Hindus, is an item in point. The thinkers of ancient India have likewise their place among the great multitude people who have tried to emphasize the various effects of geographical conditions on man's behavior and psychology, and on social organization, social processes, and the historical destinies of a group. The bioorganismic school of sociology is described as having predecessors among Hindus as among the Chinese, Greeks, and Romans. In regard to the comparison of society, particularly of a state in its social classes, institutions, and social processes with an organism, especially with man or with his body and soul, or with parts of his body and bodily processes, Sorokin commences with passages from Manu and then passes on to Plato, Aristotle, Cicero, Seneca, and others. According to Sorokin, what is now termed as eugenics was very extensively practiced in ancient India, as in Palestine and Greece. He quotes Manu, Apastamba, Gautama, Narad, and Vishnu, I think the Puran, to show that No, Vishnu the Smriti. Vishnu Smriti, there is a name of a Smriti in 18 okay, Smritis. Smriti, okay, to show that the Hindus, like the Jews of the Old Testament and the Greeks of the Odyssey and the Iliad, Plato and Aristotle attach considerable importance to blood, race, selection, heredity. In regard to ancient eugenics, Sorokin's social mobility, which, as we have seen, is mainly a study in institutions and facts,
has likewise much to say. In this work, also he places the Hindu ideas of blameless marriage or blamable marriage, etc., alongside of those of Plato, Hammurabi, and Confucius. Can you explain what If is this if blameless marriage, blamable um marriage? essentially, like I guess Uh, maybe I can search it. I'll search it online. yeah, yeah, go ahead, go ahead. Nina, you have the correct perpetuity subscription. You can take that reference and ask AI what it says. Right now, I'll just do this. Okay, no problem. If you want, you can do that because you need to give the context of the book. So that's why, or it will be Hmm. the context will be lost. Yeah, I think it's not showing up. Yeah, because the Maybe context is not I there. asked Google will not be able ChatGPT. to understand it. What is that? Blameless. Blameless also Yeah. didn't work. That's a very interesting word itself. Blameless marriage. Yes. Blameless Okay, marriage. some Bible verse comes up. I'll try to search. Okay, I got it. So an elder must And this is be from, I think, blameless, Bible. faithful. Yes, yes. So I know they're from the West, so they'll Faithful be to using his that wife. cultural concept. Okay. Must Okay. be blameless, faithful to his wife, man whose children believe and are not open to the child of being wild and disobedient. I Okay. think maybe being faithful to the Maybe wife. faithful to wife. Yeah. Possibly he was Yeah, referring to this. most likely that. So illegitimate marriages basically come in this. Yeah. Did you have any other thoughts on what we read so far? That's very Uh, interesting thing. So, like in ancient India, you had Vedic marriage or traditional marriage. You also had marriage which are not recognized by the society. So that's very interesting. Yeah, That yes, there are, I think, society, kinds of Pishach Vivah and these kinds of things also happen. right. Like, Those will I come under think blameless I will marriage show you probably. various types of this marriage from Gautam Dharma Sutra one day. That I think four of them are legalized. Two of them are legalized in certain regions, and certain regions it is not. And the remaining ones, like certain marriages used to happen in which they used to kidnap the wife. Even they used to happen, but they were not legalized. But anyways, go ahead. yeah, go ahead with the Yeah. reading. The sociologistic school of sociology is described by Sorokin as that which interprets social or psychical facts as due to interactions and as a results of correlation with a certain social condition. Among the first exponents of the school, also he finds the Dhammapad and the Upanishads, as well represented as Confucianism and Plato's Republic. The bulk of Indian philosophy and ethics, especially that of Buddhism, says he, is based upon the idea that our I or self, with its empirical properties, sufferings, and joys, is a product of social contact and exists as long as the contact exists. Sorokin is convinced that the consciousness about the importance of economic factors in human behavior, social organization, and the historical destiny of a society did not originate with Marx and Engels, but that it can be traced back to immemorial times. Among the ancient representatives of this kind of thought, he finds Buddha, Vishnu, Manu, Narada, Vedanta Sutra, Brihaspati, Gautama, Apastam, and in the company of Confucius and Mencius of China, and Thucydides, Plato, and Aristotle of Greece, as well as Cicero, Livy, and Pliny of Rome. Like the so called economic interpretation of history or culture, the so called psychological interpretation of the dynamics of the universe also is found by Sorokin to be in evidence among the thinkers of the ancient world.
Manu, the Upanishads, the Dhammapad are quoted by him in the same breath with the Chinese philosophers as well as Plato, Aristotle, Zeno, Polybius, the Church Father, and the majority of the medieval thinkers. So, do you have any thoughts or shall I continue? I think continue. So we will also take a few questions in between. So, Sure, sure. Is there any question you want to take up? not now. Let's finish the next para, and Okay. I'll check Yeah. it. You can interrupt me when I finish a paragraph. So that time it'll be easier. Sure. In Sorokin's sociological analysis, there is a kind of sieve within each channel of vertical circulation whose function is to sift the individuals and accord them their proper place. He believes that every society from the earliest times has followed the principle that the social placement of individuals must be according to talent. Or maybe we can say guna in this case. This ideology he detects in Indian as much as in Chinese, Greek, and Roman writers. In my studies on Hindu culture, attention was directed to fallacies of Orientalists and traditional sociologists. One was monism, and the other was their inveterate obsession by the dogma of alleged distinction between the East and the West. It is interesting that Sorokin's works have not only challenged the monistic interpretations of culture and social relationships, but the ideologies of race distinctions also. In his historico comparative and statistico psychological investigations, there is no place for India as a country in splendid isolation, geographical or cultural. The facts and ideas examined by him point to no extraordinary, dominating, or monistic impacts of region, climate, or race. India's affinities with the rest of the world in institutions as well as ideology are thus automatically established wherever affinities are in evidence. From the standpoint of general sociology, Sorokin's work as a reformer is to be appraised as considerable, nay revolutionary, and its impacts on Indology ought to be profound. For one thing, they are immensely calculated to militate against the Indology as established by Max Muller, Senard, and Max Weber. That is the end of this chapter. Yeah, so very interesting chapter. So we will finish this chapter by completing the our a debate on aspect of morality. So Abhay, you had a point to Uh, voice. So before go ahead. that, before that, does unapologetic or Abhay have any thoughts on the two pages we discussed now? For example, I found Yeah, this interesting about yeah, the one was dogma of monism, other alleged was religious distinction. distinction. Yeah, actually मेरे को जहाँ तक समझ में आया जैसे आप बोलो कि पूरा एक था वो तो मेरे को पूर्ण रूप से एक समान था हमारा तो वो तो अनअपोलोजेटिक हिंदू, वो बस चीज मैं कंप्लीट है। एक शब्द को क्लैरिफाई कर दूं इधर, फिर आप बोल लीजिएगा। हम्म। मोनिज्म का अर्थ होता है अद्वैतवाद, जिनको नहीं पता हो। आगे आगे नहीं आप बोलिए। वहां पे क्या वन वाज मोनोइज्म एंड अदर वाज द इंटरवेटिव ऑब्सेशन विद द डॉग ऑफ द एलिजेड डिस्टिंक्शन। तो यहाँ पे मोनोइज्म अद्वैत के लिए नहीं है क्योंकि आप देखो कि मेरे को ये लग रहा है कि उसके पर्सपेक्टिव में जैसे इंडो यूरोपीय भाषाएं हैं, इंडो यूरोपीय कल्चर है, तो उस हिसाब से कॉन्टेक्स्ट में लिया जाएगा। देखो सिंगलनेस आया हाँ, तो तो वो मेरे को इस स्ट्रिक्टली लिमिटेशन में अद्वैतवाद लग नहीं रहा है। है। हाँ, अद्वैत जी, मत के लिए आप लिखोगे नॉन डुअलिज्म कि एक हाँ, तरफ तो है आपका एग्जैक्ट कुछ ट्रांसलेशन होगा। लोग सारा इंडो यूरोपीय कल्चर एक है बोलते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि जो एकदम पश्चिम और पूर्व में बहुत मतलब पूर्ण रूप से भिन्न है। वो इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में वैसा आया है।
चलो। और मैं बोल रहा कि उसका अपन देखें तो अगर अपन कुछ कुछ सिमिलैरिटीज के ऊपर बात करें तो आपको मिलेगा कि बहुदेववाद, जैसे कि बहुत सारे देवता अपन पूर्व के काल में मानते थे, जैसे ग्रीक्स में जूस जूस और ये सब होते थे। और भारत में भी इंद्र वरुण इत्यादि देवी देवताएं होते थे। तो इस एस्पेक्ट्स में सिमिलर है। अब अंतर आपको देखने को मिलेगा कि जो यूरोप है बाद में जाके वहां पे आए ये अब्राहमिक फेथ्स आए, तो वहां पे केवल एक मतलब कि वन गॉड एंड अदर्स आर डीमंस का कॉन्सेप्ट आया। हमारे इसमें ऐसा तो डेवलप नहीं होता जहाँ तक समझ में आया मेरे को। और अ, हाँ आप बोलिए, मुझे लगा आपका हो गया। हाँ, फिर उसके बाद आप देखें कि कुछ कुछ चीजें अपन को जो सिमिलर देखने को मिलती हैं, जैसे कि आप देखें कि जो कुषाण का काल था भारत में था, और मतलब भारत इन द सेंस कि जो पंजाब का क्षेत्र है आज का पंजाब का क्षेत्र, थोड़ा बहुत आपका हरियाणा क्षेत्र, तो पाकिस्तान का क्षेत्र। तो उधर जब कुषाण का काल था तो उधर जो सिक्के मिलते हैं वहां पे तो जूस के भी मिलते हैं, जूस के सिक्के मिलते हैं। और कुछ कुछ ग्रीक डेविटीज के भी मिलते हैं हमको सिक्के तो। और उसी में आपको हमारे हिंदू देवी देवताओं के भी सिक्के मिलते हैं, जैसे शिव जी का मिल गया, फिर मतलब फिर ईरान के अहूरा माजदा का मिलता है। तो कुछ कुछ आपको तो कुछ कुछ उस पीरियड में सिमिलैरिटीज थी, इस चीज को तो मानना चाहिए। लेकिन एकदम एक कल्चर है वो चीज मेरे को गलत है, मैं इस चीज से उनकी सहमत हूँ। हाँ। हम्म। हाँ तो जैसे आपने कहा, अब वो मोनिज्म की जो आपने बात की कि इस संदर्भ में कुछ अलग अर्थ है। अ, हम्म। मैं ठीक से मैं समझा नहीं कि इस संदर्भ में अलग अर्थ है या नहीं, पर जैसे मोनिज्म का अर्थ होता है कि एक मूल से ही सब आए हैं, जो अद्वैत वेदांत का हाँ, जो ब्रह्म की बात करते हैं। तो जो जितना मैं एक ईश्वर मोनिज्म जानता हूँ, का विभिन्न रूप धारण अ, करता है वह मोनिज्म का वो है सिद्धांत। एक बहुत हाँ सिंपल वही। शब्द है कि एक एक ईश्वर से विभिन्न वह रूप धारण करता है, वही सारे सृष्टि के रखता है, वह सर्वव्यापक है, वह भिन्न रूप लेता है, जैसे कि दीवार हो गया, फिर कोई देवताओं का रूप ले लिया कोई, मतलब वो मोनोइज्म का कॉन्सेप्ट है कि सारी चीजें लेते हैं। हाँ पर आजकल मैं देख रहा हूँ कुछ अद्वैत, जो अपने आप को अद्वैतवादी बोलते हैं, वो अद्वैत को एकदेववाद से जोड़ रहे, वो वो तो दोनों को होता मिला दे है। रहे। ये विचित्र है। देखो ना, अभी आप सर्च करो, नैनर आप सर्च कि करो ऋग्वेद हाँ। 6.47.18। आप सर्च करो ऋग्वेद 6.47.18, 47.18। हाँ, इसी का कर लेते विजडम हैं लिप। बस। हाँ, हाँ यही वाला कर लो, कोई सा भी कर लो वो तो। हाँ, ये है आपका मोनिज्म का कॉन्सेप्ट, कमेंट्री पढ़ना कि assumed Indra has assumed, Indra presents himself as, commentary में पढ़ रहा हूँ, as Agni, हाँ। Vishnu or Rudra or any deity who is the actual object of worship and is really the deity to be adored. He is identifiable with each. Horses yoked, India's chariots and horses are multiplied according to the forms in which he manifested himself. Indra here is identified with Parameshwara, the first cause, identical with creation. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक ईश्वर है वह भिन्न रूप धारण करने वाला है। यही है मोनिज्म का कॉन्सेप्ट। अब इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन मान लीजिए कि वह सारी वस्तुओं को भी रूप में धारण करता है। हाँ हाँ वही, मैं वही चाहता था कि किसी को कंफ्यूजन ज्यादा ना हो उसको लेकर। हम्म। अच्छा, और अच्छा मैंने वो वाली स्क्रीन फिर से दिखाना, मेरे को एक चीज उसमें बतानी है और ऋग्वेद के ऋग्वेद 6.47.18 वाला। में। हाँ। हाँ हाँ। अब देखो इन लोगों ने क्या किया है कि माया का अर्थ इन लोगों ने यहाँ पे इल्यूजन किया है
जबकि जो शायन है, शंकराचार्य, हाँ, रामानुजाचार्य, यहाँ इनने माया है, माया का अर्थ, माया भी। हाँ, माया का अर्थ उन लोगों ने ज्ञान किया है, ज्ञान रूपेण अच्छा, निरुक्त के आधार पे। तो ये एक इंदु थोड़ा माया भी। हाँ, इंद्र अपनी माया से विभिन्न रूप धारण करते हैं। तो वहां पे माया का अर्थ ज्ञान रूप से, मतलब ज्ञान शक्ति से। इल्यूजन से नहीं बोला उधर। हाँ, और इंद्र ये, के पास ऐसे ज्ञान होंगे जिससे वो अपने विभिन्न रूप हाँ, धारण कर रहा हो। क्योंकि जो यास्काचार्य का निरुक्त है उसमें माया शब्द का अर्थ ज्ञान दिया है। हाँ, यहाँ भी मैजिक ट्रिक डिसेप्शन ऐसे ट्रांसलेट वो किया है। उसने वैसा किया है ट्रांसलेशन, लेकिन जो ट्रेडिशनल आप देखोगे संस्कृत में तो उसमें ज्ञान आता है। समझ गया। बाकी वापस अपन कंटिन्यू आ जाता है, अपन तो टॉपिक से डेविएट हो गए। हम्म। भूपेंद्र दा, गो बैक विद रीडिंग। कोई कमेंट है हाँ, जो एक आपको एक लेना? एक कमेंट है। एक कमेंट है जो अभिजीत ने कहा है, तो उसको हम लेते हैं। ओके। अभिजीत ने कमेंट किया है। ही हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन। तो उसने कहा है कि हाउ डू यू सी द आइडिया ऑफ ऑब्जेक्टिव मोरालिटी प्रपोज बाय पीपल लाइक सैम हैरिस। इसने मुझे सवाल पूछा है, पर मुझे इस बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो मैं नीनर से या पूछूंगा गेस्ट से जवाब दे। तो अभय, आप बोल सकते हो इस पे, आप इस पे पहले बात कर रहे थे ना? हाँ, ठीक है। जैसे मैं भूपेंद्र दा के ही प्रश्न को उत्तर देते हुए इसका दे देता हूँ। भूपेंद्र दा ने कहा कि एब्सोल्यूट मोरालिटी नहीं होती, और मैं उनसे सहमत हूँ। मैं कह रहा हूँ मोरालिटी के भी कई आयाम होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव मोरालिटी, एक रिलेटिव मोरालिटी, एक सब्जेक्टिव मोरालिटी। तो कुछ बातें सब्जेक्टिव मोरालिटी या इंडिविजुअल मोरालिटी में आ सकती हैं। कुछ बातें रिलेटिव मोरालिटी, जैसे कि इंडियन कल्चर की अपनी मोरालिटी होगी, अमेरिकन कल्चर की अपनी मोरालिटी होगी, तो ये रिलेटिव मोरालिटी होगी। और ऑब्जेक्टिव मोरालिटी मतलब जैसे यूनाइटेड नेशंस का, आप कह सकते हैं ह्यूमन राइट्स चार्टर, कुछ कुछ उस पर एक उन्होंने रूपरेखा बनाने की चेष्टा की है। सबसे सरल उदाहरण दूंगा, कोई महिला के साथ यदि दुष्कर्म करता है तो उसको आप गलत ही कहेंगे, कोई भी कल्चर में क्यों, कोई भी समय में क्यों। उसको आप नहीं कह सकते कि उसका कॉन्टेक्स्ट ये था, वो था, नहीं। महिला के ऊपर अत्याचार हुआ या बच्चे की हत्या की गई है, कोई नवजात शिशु की, उसको आप 100% नहीं भी तो 99.9% समय गलत ही कर। तो मेरा ऑब्जेक्टिव मोरालिटी से वो अर्थ। तो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी होती है, पर ऐसा भी नहीं है कि मोरालिटी खाली ऑब्जेक्टिव होती, उसमें सब्जेक्टिविटी और रिलेटिविटी भी होती। जैसे इंडिया में जब आप किसी की शोक सभा में जाएंगे तो सादे सादे कपड़े पहन कर जाएंगे। अमेरिका में सादे कपड़े अच्छे कार्यक्रमों के लिए पहने जाते। वैसे ही सब्जेक्टिव मोरालिटी कि मैं अपने लाइफ में कैसे चलता हूँ, कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे ढंग से चलेगा, वो होती। वही मेरा कहने का। तो मेरा एक प्रश्न है। तो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का आधार क्या बनाएंगे आप? अब जो मैंने दूसरों से सुना है वो है ह्यूमन फ्लरिशमेंट, कि जिसमें मानव का उत्थान हो, मानव का कल्याण हो, वो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी, उसका आधार पर वो इस पर भी है। जैसा मैंने, मतभेद होते हैं। हाँ, बोलिए बोलिए, आप पूरा कर लीजिए प्रश्न। तो मतलब इस पर भी मतभेद हो सकते हैं कि ह्यूमन फ्लरिशमेंट के लिए क्या चाहिए, अम, वो भी तो इंडिविजुअल पे डिपेंड है कि, और कल्चर पे भी डिपेंड है। अवश्य, जैसे मैंने ज- अभी बताया कि रिलेटिव जैसे और कि सब्जेक्टिव कज़ाक, मोरालिटी होती है। हाँ, तो अगर आधार ही ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव सच में ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ ना। हुआ ना, नहीं मैंने उसमें पहले ही वैलिड है। एग्जाम्पल दिया ना, महिला पर अत्याचार गलत है। वो महिला के चीज भी साथ तो, अत्याचार नहीं होना चाहिए, वो मोरालिटी। वो आप वो किसी भी उसका कल्चर भी में तो देख एक लीजिए। आधार होना चाहिए ना, क्योंकि अब जैसे अगर कजाक में तो, मतलब कजाक नहीं बोल रहा हूँ, किर्गिस्तान में तो लोग है ना, क्या है, शादी करने से पहले है ना महिला को उठा के लेके चले जाते हैं, उसको जबरदस्ती शादी करवा लेते हैं। गलत आज है, भी होता है। गलत है वो, आप जाके, स्ट्रेट बात है।
तो अब आप उसकी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का आप क्या बेसिस रख रहे हैं? अब किस चीज के आधार पे आपको पता चला कि ये चीज सही है, कि ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है? किस चीज के आधार पे पता चला? क्योंकि महिला को कंसेंट नहीं देने दिया जाएगा, महिला का कंसेंट तो होना ऐसे चाहिए। तो मतलब कि अगर तो दूसरे पार्टी ये भी क्लेम कर सकते हैं कि अरे मेरा तो कंसेंट है, तो उससे क्या होता है? नहीं, कंसेंट दोनों पार्टीज का होना चाहिए, आप किसी के साथ तो जोर अगर कोई जबरदस्ती नहीं कर दोनों सकते। पार्टियों का कंसेंट है कि हम मतलब कि लेट्स से एग्जांपल लेते हैं कि मैं स्मोकिंग करता हूँ, ठीक है, मेरा भी कंसेंट है, मतलब मेरे शॉपकीपर का भी कंसेंट है, वो ऑब्जेक्टिवली सही है कि गलत है? ऑब्जेक्टिवली गलत है, क्योंकि वो आपके शरीर को हानि पहुंचाता है, पहली बात। तो दूसरी ये बात, आप आप तो अब ये आपके पब्लिक बेसिस आ रहे हैं, जो बेसिस आ रहा है वो फिर कॉज एंड इफेक्ट के थ्रू आ रहा है, मतलब वो एक कुछ कॉज टेम्परेरी एंड चीज इफेक्ट, का आधार पे ले रहे हैं। कॉज एंड इफेक्ट के बेसिस पे भी आ रहा है, इसका साइंटिफिक बेसिस भी है कि वो आपके शरीर को क्षति पहुंचाता है। फिर आप पब्लिक स्मोकिंग करेंगे तो तो उसके चलिए जो आप पैसिव स्मोक है उससे ऑब्जेक्टिव भी क्षति मोरालिटी से पहुंचती है। आप ऑब्जेक्टिव मोरालिटी से माता बहन और पत्नी में भेद कैसे करेंगे? मतलब ऑब्जेक्टिव मोरालिटी माता किस आधार पे आप रखेंगे? क्योंकि अगर लेट से कंसेंसस फ्यूचर में कभी, जैसे आप देखें कि मैं बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन कुछ कुछ कल्चर्स की जो क्रिएशन की स्टोरी है उसमें तो इंसेस्ट से शुरू होता है, तो आप उसको कैसे देखेंगे? देखिए, मानव उत्कर्ष यही मूल सिद्धांत होता है। आप जैसे बोल रहे हैं कि इंसेस्ट, अब इंसेस्ट में प्रॉब्लम क्या है? इंसेस्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो संतान उत्पत्ति होती है, उसमें जो संतान जन्म देती है उसमें विकृतियां आती है जेनेटिकली, इसीलिए इंसेस्ट को मना किया वो अगर हाँ, तो ये चीज तो इसकी, लेकिन गया। ये अब तो ये ऑब्जेक्टिव चीज बात है, साइंस इसमें सब्जेक्टिविटी नहीं है, इसमें कोई सब्जेक्टिविटी नहीं, ये अच्छा, तो ऑब्जेक्टिव बात मैं कहना चाहूंगा कि ने बोले। ऐसा भी हो सकता है कि ये जानकर भी लोग करते हों, क्योंकि उनको लगता होगा कि उतना भी बुरा नहीं है। ऐसे भी हो सकता है ना, फिर तो ऑब्जेक्टिव नहीं हाँ, हुआ। मतलब कि नहीं। तुम्हारा नहीं, लोग कंसेंसस करते मेरा वो उनकी कंसेंसस, गलती है, वो बाकी चीज अनैतिक कार्य है, सीधी बात। मतलब वो कोई कोई ठीक है। कोई कोई काम का कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, मैं वही कह रहा हूँ। बस मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर नैतिक बात जो है वो हर बात को आप ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की दृष्टि से देते नहीं, पर एक अंश होता है मोरालिटी का जो सब पर लागू होता है, जो यूनिवर्सल, बट वो चीज जैसे धर्म। यूनिवर्सल है, इस चीज का आपको कैसे पता? अच्छा, कोई चीज हमारे यूनिवर्सल है? साथ हम हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, शेखर। अ, आपको कुछ कहना है इस बारे में? नहीं, अभी तो नहीं कहना, मैं अभी सुन रहा हूँ, मैं बताता हूँ अच्छा, बाद में। ठीक है। ओके, ये मेरा go ahead. क्वेश्चन We will finish. आप We will finish this in मेरा about 10 क्वेश्चन minutes. यस मेरा क्वेश्चन है कि अपन को ये कैसे पता कि कोई कोई चीजें ऑब्जेक्टिव मोरालिटी यूनिवर्सल के अंदर आती है? हमको कैसे पता चला ये चीज बाद? एक तो साइंटिफिक मेथड है, तो दूसरा है। साइंटिफिक मेथड तो बहुत सी चीजें, मतलब अभी साइंस के मेथड में कोई चीज आई, फिर उसके थोड़े समय बाद है ना उसका विपरीत भी आ जाता है। जैसे इंडिया में जो कभी बिल गेट्स फाउंडेशन ने वैक्सीनेशंस करवाई थी बहुत सारी पहले के समय पे, वो उस समय के रिजल्ट के आधार पे तो बढ़िया है, अच्छे है, आपको कभी कैंसर नहीं होएगा, आप वैक्सीनेशन कराइए। लेकिन फिर बाद में तो उसके इल इफेक्ट्स भी हुए, तो आप साइंस से तो आप मोरालिटी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे वैसे। जैसे देखिए, मोरालिटी डायनामिक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मोरालिटी एक जगह कर थम जाती, मोरालिटी इवॉल्व होती रहती है समय समय पर मैं ये भी कहूंगा कि मोरालिटी का एक ऑब्जेक्टिव साइड भी होता है, मैं वही कह रहा हूँ। मैं ये नहीं पर कह वो रहा हूँ कि लाओगे कैसे? मोरालिटी इवॉल्व नहीं होती। हाँ, वही तो लाओगे कैसे आप? तो ऑब्जेक्टिव जो है, साइंटिफिक मेथड से जैसे तो बता रहे हो कि आएंगे। जिससे ऑब्जेक्टिव जो ऑप्शन है, अच्छा, ऑब्जेक्टिव एक लाओगे मिनट। कहाँ से? एक सेकंड, एक एक मिनट। सेकंड। एक एक बंदा। सेकंड। हम्म, शेखर, गो है शेखर, गो है। हम्म। मैं बोल रहा हूँ ऑब्जेक्टिव है, वो डिसाइड किस बेसिस पे करोगे?
ऑब्जेक्टिव इस बेसिस पर डिसाइड होता है जिसमें ह्यूमन फ्लरिशमेंट हो। अ, जैसे वाई मान लीजिए वॉर्स को हाँ वो घटाना कौन है, डिसाइड कर रहा वॉर्स है? को घटाने में नहीं कौन नहीं डिसाइड कर समझो, वो कौन कर कौन रहा है, किस कौन बेसिस पे डिसाइड कर रहे करे हो? वो एक अलग प्रश्न। कौन डिसाइड करे वो एक नहीं अलग नहीं वही प्रश्न है, पॉइंट ना, किस बेसिस पे सब्जेक्टिव, डिसाइड हो रहा तो है फिर वो एक अलग सब्जेक्टिव बात उसमें है। चला जाता है ना वो। होल्ड ऑन This is स्पीक। subjective. बेसिस में एक ऑब्जेक्टिविटी है, वही मैं समझा रहा हूँ। और वो ऑब्जेक्टिविटी है ह्यूमन फ्लरिशमेंट की, जिसमें मानव का कल्याण होता हो। जैसे आप ये तो नहीं कह सकते ना कि सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट, तो एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ तो होता ही है, वो तो आप मना नहीं, नहीं कर आप सकते तो ना। ट्रुथ सनराइजेस होता फ्रॉम है, द ये वेस्ट भी कह सकते हो, आप ट्रुथ कह होता है, सकते हो। ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दो, फिजिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हाँ कर दो, आपका सनराइजेस फ्रॉम द वेस्ट जी। भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे पश्चिम डिपेंडेंट मतलब कोई हमने तो चीज नाम होती है। दिया है, दिशा तो कोई भी हो सकता है, नाम तो कोई और भी दे सकता है, हाँ, पूर्व हो वो तो सकता है, नेमिंग दक्षिण हो नाम की कन्वेंशन सकता है है। ना। बात। अपने देख आज से मैं एबीसीडी को मैं बोलूंगा काखा गाघा, ठीक है? तो वो तो हमारा नेमिंग कन्वेंशन है ना, वो तो किसी ने देख बाद में ऑब्जेक्ट जाके का प्रॉब्लम क्या रहता है? रीनेम किया। हम्म, बोलिए। ऑब्जेक्ट का प्रॉब्लम क्या रहता है कि ये जो है ना, जिस बेसिस पे कौन डिसाइड कौन कर रहा है, उस पर रेफरेंस सब कुछ उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब जैसे मान ले कि क्रिश्चियनिटी के हिसाब से, क्रिश्चियनिटी के हिसाब से बाकी सारे जो है वो पैगन्स है, ठीक है, तो उनके सारे आइडल्स तोड़ने चाहिए, पर उनके हिसाब से वो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है उनकी, पर हमारे हिसाब से तो वो तो एक पाप हो गया ना। तो रेफरेंस आप, ऑब्जेक्टिविटी आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेफरेंस पे, सोसाइटी पे, और कल्चरल बैकग्राउंड पे, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव ट्रूथ हो सकता है, पर कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्टिव मोरालिटी अपनी बेसिस कर सकते हैं। मेरा मानना हो सकता है, क्योंकि देखिए वो जो मूर्तियां तोड़ रहे हैं वो अपने आप को फोर्स कर रहे हैं, तो मतलब दूसरे को कंसेंट करने की स्वतंत्रता नहीं दे रहे। आप फोर्स नहीं कर सकते, आप कंसेंट किसी का वायलेट करें वो वो गलत है। वो वो भी तो आप उनके ऊपर आ गए ना कि वो नहीं पर मतलब आपने वैसा कंसेंट डिसाइड ही उनके किया। हिसाब से तो, ऑब्जेक्टिव नहीं नहीं मोरालिटी सुनो, पे है। नहीं उनके हिसाब से तो हम ह्यूमंस ही नहीं है ना फिर, पेगन्स तो ह्यूमंस हुए हाँ, ही नहीं, तो फिर हमारी तो मोरालिटी हम के तो अंदर हम तो एनिमल्स बचे हैं ही नहीं ना उनके कुछ, अनुसार। तो राइट्स की तो बात ही नहीं आई। ह्यूमंस तो है ही नहीं, तो ह्यूमन राइट्स की बात ही खत्म होगी ना। तो फ्रेम ऑफ तो रेफरेंस सब चेंज कर देता है। उनके हिसाब से हम ह्यूमंस नहीं है, पर हम ह्यूमंस नहीं है ये किसने कहा? उनके हिसाब से नहीं होना और ह्यूमंस ही नहीं होना, दोनों में अंतर है। ह्यूमंस तो है, नहीं तो हमारे वही में बोल रहा उनका हूँ ना, डीएनए है, नहीं वही बोल रहा हूँ, हमारे में उनका ऑब्जेक्टिवली रक्त हम है। सारे ह्यूमंस है। हम नहीं हम उन हाँ, ऑब्जेक्टिवली तो हम हम सारे ह्यूमंस है, पर ऑब्जेक्टिवली ह्यूमंस सारे ह्यूमंस है, डिसाइड कौन कर रहा है वो? तो वो अब उसके लेट्स लिए से कि साइंटिफिक डिसाइड कोई कौन कर बेसिस रहा है? बनाया ह्यूमंस गया है। ना कि अबे ह्यूमन डीएनए अबे क्या अबे होता अबे है, कैसे अच्छा होता अच्छा, है। होल्ड ऑन ओके। सो एक चीज मुझे कहनी है कि जो अभय ने कहा पहली बात, कि देयर इज अ सब्जेक्टिव मोरालिटी, देयर इज अ ऑब्जेक्टिव मोरालिटी, और एक है रिलेटिव मोरालिटी। मेरा प्रश्न अभय से ये है कि ये जो तीनों मोरालिटीज हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, रिलेटिव मोरालिटी, क्या ये इंटरचेंजेबल है? इंटरचेंजेबल, देखिए जैसे ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को मुझे लगता है रिलेटिव मोरालिटी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी बन जाए ये थोड़ा मुश्किल है, रिलेटिव या सब्जेक्टिव मोरालिटी। पर हाँ, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का प्रभाव रिलेटिव और सब्जेक्टिव मोरालिटी पर पड़ सकता है, और पड़ेगा भी अच्छा नेचुरली। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है वो अनचेंजेबल है, और वो इफेक्ट करता है रिलेटिव और सब्जेक्टिव को, सही? ऑब्जेक्टिव मोरालिटी रिलेटिव मोरालिटी से बातें नहीं ले सकती, मैं वो कह रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी हाँ कैन ऑलवेज इवॉल्व, सॉरी, जैसे साइंटिफिक थ्योरीज इवॉल्व करती है, साइंस इज आल्सो ऑब्जेक्टिव बट इट इवॉल्व्स विद टाइम। वैसे ही ऑब्जेक्टिव मोरालिटी भी इवॉल्व कर सकती है, हमारा स्टैंडर्ड बदल सकता है। हाँ, तो मैं आपकी बात को ही ले रहा हूँ कि अगर एक मोरालिटी सब्जेक्टिव है, क्या वो इवॉल्व होके ऑब्जेक्टिव बन सकती है? नहीं,
इस पर मुझे डाउट है। सब्जेक्टिव मोरालिटी ऑब्जेक्टिव जनरली नहीं बन सकती। पर ये हो सकता है कि जिसको पहले सब्जेक्टिव मोरालिटी माना जाता था, वो बाद में उन्होंने एक एम्पिरिकल एविडेंस देके ये प्रूफ कर दिया कि ये सब्जेक्टिव नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव। वो हो सकता है। हाँ, तो मैंने जो बात कही थी कुछ देर पहले कि देर इज नथिंग कॉल्ड ऑब्जेक्टिव मोरालिटी, वो समय काल के हिसाब से तय होती है, जो समाज उसको तय करता है। तो क्या आप इससे अग्री करेंगे? नहीं, मैं देयर इज नो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी से सहमत नहीं। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी नो नो। होती है। हाँ, तो आप ऑब्जेक्टिव अपनी बात को, हाँ, आप अपनी बात को कर रहे हैं कॉन्ट्रडिक्ट। अगर आप कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी इज फिक्स, इट कैनॉट बी चेंज्ड, I am इन not दैट saying केस object. हाउ? I am I am not saying objective morality is fixed. I am saying there is objective morality. It doesn't. I am not saying that objective morality is fixed. दोनों में डिफरेंस है. But there is तो objective मैं morality. मैं तो वही कह रहा हूँ कि अगर वो इंटरचेंजेबल है, तो वो अनचेंजिंग कैसे हो सकती है? ये हार्मिंग अ चिल्ड्रन इज बैड, we all believe in that, so that becomes a objective morality, correct? It cannot be considered good by any society. तो वो तो चेंज नहीं हम्म होगी, नहीं होगी वो ना। चेंज नहीं होगी। पर वही है कि हमारा अब ये चेंज नहीं होगी। अब आगे जाकर हमको और भी खोज करने पर मिलेगा कि इसी ऐसी बहुत सारी ऑब्जेक्टिव मॉरल स्टैंडर्ड्स है जो सही है और उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया जा सकता। जैसे हम लोग को ट्रूथ धीरे-धीरे पता चल रहा है। जैसे 100% ट्रूथ है। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव मोरालिटी 100% है। अभी हमको 10% पता चला है। आगे 100 साल बाद उसका 20% पता चलेगा। ऐसे कर करके हम इवॉल्व होते जाते हैं। पर ये नहीं कह सकते कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी ही नहीं होती। हमारी अंडरस्टैंडिंग या परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव मोरालिटी अलग-अलग हो सकती है, पर ऑब्जेक्टिव मोरालिटी तो होती है। किसने दी ऑब्जेक्टिव ओके, मोरालिटी? और हम इस पे एक और डिबेट रखेंगे किसी और दिन, तो उस पर इस पर ही चर्चा होगी, क्योंकि समय के हमारे पास थोड़ी किल्लत है। तो इसको हम रखेंगे, हम इसके बारे में बात करेंगे, कुछ पेपर्स लेकर आएंगे, कुछ बुक्स लेकर आएंगे, इस पे चर्चा करेंगे एकदम ठीक तरीके से। तो अभी हम लोग किताब पढ़ते हैं। और एक और चीज, ओके, आई थिंक अभिजैन ने कहा था, उसे कुछ कहना था, पर वो मेरे ख्याल से चला गया है। तो वी विल इनवाइट अभिजैन टू कम अगेन। Abhizen, if you are there, you can come, or else we will go ahead with the book reading. Go ahead, Nina. तो मैं एक चैप्टर स्किप करूंगा क्योंकि बीच में मतलब सिर्फ कोट्स दिए और काफी ब्रॉड डिस्कशन होता है। तो ये इस चैप्टर से अब आगे बढ़ूंगा। द न्यू एंडोलॉजी इन ल्यूडर्स एंड फॉन ग्लासेनर। Nina, Abhizen has arrived. Abhizen, you want to share something on the debate that we are having on morality? यस। Please go ahead. No, I just asked because I specifically mentioned Sam Harris because he was proposing by the idea of using science. And that's not like a concrete idea, but it's just evolving, you know. So that's why I asked the question, not to say what is objective, who will decide. It's specific science, objective morality through science. How will they do it? We don't know. He has a TED talk on it. Is that idea, not objective morality per se. Very good. So हम लोग एक काम करेंगे. We will have a one more stream dedicated to the TED Talk, and then we can carry on the debate on that show itself. So it will yes, be very interesting to watch the TED Talk, and then we will discuss among themselves and also with the audience. So go ahead, Nina, with the reading. यस। सो आई कंटिन्यू। One of the latest exponents of this new Indology is Heinrich Liiders of Berlin, the doyen of Sanskritists in Germany. In Der Orient und wir, Berlin, 1935, book of 6 chapters by different scholars, Liiders has a paper on India. Liiders invites attention to the work of the Indian scholars of today. So I guess he's talking about 40s or 50s when this book is published. That at that time it was latest.
such as are interested in the study of ancient and medieval India with approval. He points to the conclusions of modern Indian archaeological and historical scholarship to the effect that the Indians were nicht nur in sich gekehrte stille Denker gewesen, not merely self-ruminating passive thinkers, and that their achievements can be placed by the side of the Occidental at any rate of the same period. Ihre Leistungen sich, I'll not read that. Uh, his own position has been clearly exhibited by himself. It is not true, says he, that the strong tendency towards the inner and the otherworldly absorbed all the energies and led to inactivity and retreat from life. I'll skip the translating part. In his judgment, this was not the case even in Buddhism, in which the nothingness of life was most strongly brought out. According to his analysis, one should not overlook the fact that it was, after all, not only a small percentage of the people that practiced Weltflucht, that is, retreat from the world, and entered the order to achieve nirvana, which could be attained only in the monastic class. The laity, which believed in the order, did not think of giving up the worldly activities. By laity, he means common people, and the renunciation of secular life was not demanded from them. Liiders refers also to the Jaina communities of today, in which, as he says, the laity consists mostly of the commercial people. It is just the richest class that belongs to the Jaina laity in the same manner as the old texts report of the composition of the Buddhist laity of yore. The attempt of Brahmanism to establish an Ausgleich balance between the life in the world and the flight from the world has also demanded Luder's attention. The relations Uh, between the first Nina, three, Nina, yes, Nina, just one yes, interjection. So the word he uses the word called Brahminism, correct? So yes, Brahminism कोई शब्द नहीं होता है, पर at that time it was used commonly. So because yes. So उस I समय guess पे he's using it to describe the Vedic tradition and adjacent Hindu Actually, I traditions. will tell you yeah, what they do is in the scholarly language, they distinguish in the present Hinduism and the Vedic Hinduism. They say that the present Hinduism has influence from the Puranas, so it is Puranic Hinduism, and in the older days, it was Vedic Hinduism and Brahmana. The concept of Brahmanas was very prominent, so Brahmanism. That's what they try to say. But I don't think that Okay, that is the case. But anyways. yeah. yeah, I gave the interjection because in current context and current political and sociological thing, Brahminism means something else. So it's important to clarify that the author is written the book 100 years ago. So the word Brahminism yeah, here means something else rather than today what we construe currently. yeah. So it is they use that term usually to compare with say like Buddhists, just like they were talking about Buddhists and Jains here. So here they use Brahmins to show the um, difference in how they treat the thing. So the attempt of Brahmanism to establish an Ausgleich, that is a balance between life in the world and the flight from the world, that also demanded Ludo's attention. The relations between first three ashramas, stages of the social polity in which Tatic is leading, active life, the study of the Vedas, and the establishment of the family are prescribed in the last stage, which is characterized by the Streben nach der Erlösung, effort to achieve salvation, indicate this balancing of the two motives in Brahmanism, says he. So, do you have any thoughts on this? I don't think people have thought, so we continue the reading Yeah, and then we will continue. take a Okay, pause. Yes. yes. The political history is summarized by him as also showing that the Indian people by no means spent their days in inactive brooding. In pre and post Christian times were established empires
in India, which exceed all political forms on European soil in area. Liiders refers to the comprehensive political manual of Kautilya in which uh, the administrative machinery of a gigantic empire, as that of the Mauryas, is described in all its details. Incidentally, be it observed that to Liiders, the Kautilya problem does not seem to exist as an unsolved question. So here he talks about that um, there is an issue or something mentioned by Kautilya that an what you can say a large empire has the issue of administrative machinery, but he thinks that this Kautilya problem is actually solved elsewhere. So continuing, the Indians are described as having pursued a powerful expansion and colonial policy for centuries. The countries of further India, Uh, Pegu, Niner yes, again, interjection. So the author uses the word colonial. Okay. So it was yeah, at that time it was a normal thing to do, but the it's very important for us to actually clarify things who are listening to this or watching this is that at Kautilya's time it was not a colonial thing. It was an expansion of empire which happened naturally when an empire grows bigger and has enough strength and machinery to go ahead and expand the empire. So here the colonial uh, does not what colonial people have done like British and Dutch done in India in Africa. So just a clarification. no, actually, I agree with him when he uses colonial because what happened Mhm. in this period is that Indians went there and went to Southeast Asia and they settled and they actually became kings and they ran empires and from there itself. So, like later in Yeah, Europe, they okay, went, yes. Yeah, understand, but 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 under yeah, go ahead. but they did did they not do One settle by things one. like exactly. British did? They married them. They married in the power structure of the society, not like the Yes. European colonization, which was extractive in the nature. The word colonial, in the sense which it is describing here, is extractive nature, which is specially practiced by the Europeans only. No No, other I civilization disagree. has practiced such type of activity on others on this large scale. So I'll explain why I disagree because at around the same time this was written, R.C. Majumdar also wrote, I think, essay or maybe an entire book on uh, colonialism by Indians in Southeast Asia, and he had studied that quite in detail. So we have now become used to saying that colony or colonial policy is kind of with negative connotations, but that is not true. It can be in other ways also. Indians did settle there and they started empires. Okay, Shekhar, But go ahead. Go ahead, Shekhar. They Go ahead actually with your married in the answer. power structure, as I was saying. The colonization happens when you remove the already existing power structure, which they did not do that. They just assimilated the power structure that was already existing there. They further expanded that. The colonization you are discussing in is specifically European in nature and in practice. The word colonization will not be used Okay. in the context of Southeast Asia, where the assimilation or amalgamation of the cultures which was happened there. As the So same I'll thing just look at happened the with exact Chinese definition. also. Hmm. See, the action or process of settling among and establishing control over the indigenous people of an area. Uh, to an extent, this happened in the sense that the action or process of settling among and establishing control happened, but it was with the indigenous people, I think the not issue over. here is the nature of colonization is different in two different cases. In European case, the nature of colonization was expansionist, Yes, while in our yes, case it was more inclusive. yeah. That's why I'm saying Uh,
The You can other call thing it also was that colonization, but it's in without the negative connotation. you can call it like cultural expansion, maybe not the Yes, colonization. yes. Colonization is specifically used for the European whatever they did on those times. Yeah, but in scholarship, colonization has become the quite. It's been used for 100 years or so. Even I told you that R.C. Majumdar, I think his thesis was on colonization in Southeast Asia by Indians. But nowadays it is not used, no, मुझे लगता है Right, ये in right. Southeast शब्द का Asia specifically. ये शब्द इतना कलंकित हो चुका है कि इसीलिए हम अपने संदर्भ में इसका उपयोग नहीं करना चाहते और इससे Yes, संदेश भी yes. एक विशेष रूप से जाता है कि नहीं कॉलोनाइजेशन मतलब दूसरों पर अत्याचार करना या दूसरों को अपना संस्कृति अपने विचारों के अधीन लाना Yeah. राजनीतिक रूप से अधीन लाना हाँ, वो वर्ड उसका की मीनिंग संदेश एक इवॉल्व अलग होता जाता है। है। सिचुएशन पे भी डिपेंड करेगा ना कि आज के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब है, उस टाइम के कॉन्टेक्स्ट में क्या कुछ अलग मतलब होगा, पर अभी का कॉन्टेक्स्ट में अलग कुछ मतलब है कॉलोनाइजेशन का। अच्छा, वर्ड मुझे की एक बात मीनिंग बताइए इवॉल्व अभय होते को। हैं। Okay, so one thing is to Abhay. See, the word colonization or colony is specifically used for Christian empires, specifically who expanded Christian in nature, and they expanded in Africa, in North South America, also in Asia. So whenever we use the word colonization or colony, we are directly referring to the expansion, the brutal expansion, extraction. So it represents that specific No, I activity. disagree. So go ahead. And Yeah, go ahead. Because in this case, and to it give is you an example forceful from in our nature. मैं एक बार It is उत्तर दे forceful in देता हूँ nature. दादा के हाँ प्रश्न का। हाँ हाँ मैंने जो अभय बोलो। अभी डेफिनेशन स्क्रीन पे देखा मैंने उस अनुसार बात की थी। अब हो सकता है कॉलोनाइजेशन का जो उन्होंने इतिहास बताया दादा ने वो भी सच हो, मैं नहीं मना कर रहा हूँ उनको, पर मैंने जो परिभाषा देखी उस आधार पर मैंने अपने विचार रखे। हाँ, हम see we have to be If you objective in go by our the approach. context, if you go by the Uh, ancient practice which was originally done by the Romans, you go to a new land, you eradicate or genocide the whole masses and you take over the land. That is the practice of colonization. The context which is here, the definition is presented, it is not the original context. It is context of the 21st century. The original purpose of the colonization is to take over the land, genocide the natives. If you cannot do that, like you cannot genocide the natives as they are more in number, you extract them, you make them poor, and you impose your cultures on them. You destroy their society basically. So I have a doubt here. मेरा एक संदेह है, yes मैं एक बार कि भारत के लोग दक्षिण पूर्वी एशिया में गए थे, तो उनकी भी अपनी संस्कृति थी। भारत के राजाओं ने कहीं न कहीं हिंदू धर्म वहाँ पर फैलाया, कह सकते हैं। तो क्या हम उसको भी उसी ढंग से फिर कॉलोनाइजेशन कह सकते हैं? okay, नहीं नहीं कह Honorable सकते ना Hindu, वो। go ahead. अच्छा देखिए, इसका उत्तर मैं हाँ मेरे मेरे अनुसार तो ये कहना आज के समय के अनुसार तो गलत है, क्योंकि जैसे देखें आप मध्यपाहित एम्पायर को देखिए। मध्यपाहित एम्पायर में आप एक एग्जाम्पल के रूप में देखें तो उधर का जो राजा था वो तो उधर का नेटिव ही थे, उधर के नेटिव ही थे, उनने हिंदू कल्चर को अडॉप्ट किया हुआ था। फिर अगर अपन इंडियंस उधर थोपा होता तो उनके जो लोकल डेइटीज वगैरह होते हैं वो सब तो गायब हो जाने चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि उनके लोकल डेइटीज लोकलाइजेशंस बहुत हुई हैं। जैसे अपन नाग शब्द भारत में तो सर्प या फिर सरपेंट के लिए यूज होता है, लेकिन आपको उधर की जो प्रतिमाएं मिलती हैं जैसे थाईलैंड की, इंडोनेशिया वगैरह की, तो वहां पे तो नाग शब्द ड्रैगन के लिए होता है, क्योंकि उनके कल्चर में ड्रैगन का वो होता, तो वो असाइमिलेट हो गया हमारे अंदर भी।
वैसी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। तो उनकी मान्यताओं को हमारी मान्यताओं से क्या मिंगल होते हुए देखने को मिलता है। अब जैसे जो हरिहर की एक मूर्ति है, उधर तो राजा ने तो अपने मतलब उधर आप फेशियल फीचर्स देखेंगे पूरे उनके रीजनल बेसिस पे होते हैं, उधर के लोग जैसे देखते हैं वैसे फेशियल फीचर्स देखते हैं। अब मतलब हम वैसे वैसे ही देखने को मिलता है। तो अगर कॉलोनाइजेशन होता तो फिर अपना हिंदू जो हमारा ड्रेस कोड वगैरह है, जैसे हम लोग जैसे पहनावा पहनते हैं, हम तो वैसी चीजें भी करते हैं। अगर उस सेंस में आज के सेंस में जैसे अपन लेते हैं कि अपन लोगों ने उनका कल्चर अडॉप्ट किया, जैसे शर्ट टी शर्ट वगैरह पहनना, तो उधर के लोगों का तो ऐसा नहीं देखने को मिलता। उधर के खुद के लोकल ड्रेसेस वगैरह भी होते हैं। प्लस आप देखें कि हमने उनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं किया, जबकि बाकी के जैसे आप जापानीज का देखें, जापानीज कॉलोनाइजेशन ऑफ कोरिया, उसमें एक्सप्लॉइटेशन एक बहुत की फीचर था। यूरोपियन कॉलोनाइजेशन में भी एक एक्सप्लॉइटेशन एक की फीचर था। तो अगर आप बोलें कि साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया ने कॉलोनीज बनाई, तो आज जैसा कॉलोनाइजेशन का मीनिंग लेते हैं नेगेटिव सेंस में, उस सेंस में तो नहीं लिया है। हाँ शेखर, ठीक go है। ahead. शेखर। हाँ ठीक है, बहुत डिफरेंस एक और डिफरेंस आएगा कि इन यूरोपियन स्पेसिफिकली कॉलोनाइजेशन हमेशा फोर्सफुल होता था। वहाँ हमेशा आप सोल्जर्स भेजते थे, लड़के मार के सब खत्म कर देते थे। हम जो साउथ ईस्ट एशिया का केस है, वहाँ पे हमें ज्यादातर जो हुआ ना, मर्चेंट लेके गए, मर्चेंट्स जो इंटरेक्शन हुए थे ना, उनसे वो जो कल्चर है वो फैला है। तो आप उससे भी देख सकते हो कि वहाँ वहाँ पे वो कॉलोनाइजेशन का आप केस बोल ही नहीं सकते ना पूरा, क्योंकि वापस तो उन्होंने कुछ भेजा ही नहीं है। या जो ओरिजिनल नेटिव नेशन है उनके, उनसे उनका कोई कांटेक्ट है ही नहीं ना बेसिस पे। कॉलोनाइजेशन तो उन्होंने अपना एक बेस बना लिया, कॉलोनी बना ली है, और वहां से वो फर्दर एक्सपांशन कर रहे हैं। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, तो इस पर मेरे 2 प्रश्न हैं, छोटे से। एक तो है कि हम सबको पता है कि राजा राजा चोल या राजेंद्र चोल श्री विजया साम्राज्य में जाकर जो उन्होंने आक्रमण किया था आर्थिक कारणों से, वो एक उदाहरण है। उसको क्या कॉलोनाइजेशन कहना चाहिए? दूसरा एक है, मैं भूल रहा हूँ, कि अरब से बहुत सारे जो मुस्लिम व्यापारी थे वो केरल में आए थे, ठीक है? वहां से केरल का बहुत हद तक इस्लामीकरण आरंभ हुआ, तो उसको फिर कॉलोनाइजेशन नहीं कहना चाहिए। नहीं, केरल के केस में नहीं होगा ना, क्योंकि वो मर्चेंट्स के थ्रू आए थे। कॉलोनाइजेशन हमेशा फोर्सफुल होता है नेचर में, ठीक है? जो भी चीज फोर्सफुल अच्छा, ना नहीं हो ना, नहीं, आप और समझे नहीं आपकी कि आपने कॉलोनी क्या होता है। लंबे अच्छा पीरियड तक नहीं, उस पर आप कंट्रोल नहीं किया ना, तो आप कॉलोनाइजेशन नहीं बोल सकते। तो वो सर, कॉलोनी का चोल राजा कॉन्सेप्ट नहीं के समझे आप संदर्भ लोग। में कह सकते हैं क्या नहीं, उनके केस कॉलोनाइजेशन? में नहीं होगा ना। वो किंगडम एक दूसरे के साथ में लड़ रहे थे वो, ठीक है, और वो वापस आ गए थे रेड करके। अच्छा, ओके। कॉलोनी का कॉन्सेप्ट है हाँ, कि एक लोग जाके वहां बस गए और वहां पर अपने पावर स्ट्रक्चर्स और में जो मतलब चोल उन्होंने क्लाइम राजा अप का किया। शायद उस पे ये जाता है ना। यूरोपियन डेफिनेशन है जो तुम बता रहे हो निन्नर। ये यूरोपियन डेफिनेशन है जो कि एडजस्ट की गई है 21st सेंचुरी के हिसाब से। ओरिजिनली अगर तो तुम देखो तो मतलब रोमन्स ने ऐसा कभी नहीं कॉलोनी किया ना, का कारथेज को कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया उन यूरोप लोगों ही ने। देगा ना, तो और कोई नहीं देगा। तो वही बोल रहा हूँ ना, यूरोपियन के कॉन्टेक्स्ट में मत लो ना। वो तो अब वो तो पूरा क्या होता है, अपोलॉजिस्ट बन के बैठे हैं कॉलोनाइजेशन का। तो उस हिसाब से आप कैसे उसमें डिस्कस कर सकते हो? उनके एक्शन ठीक से है, आप कुछ कर सकते हो, पर उनके लिटरेचर से तो मतलब जो अपोलॉजिया जा रहा है उनके हिसाब से, उसमें तो कुछ आप कर नहीं सकते। ठीक है, आगे पढ़ते प्लीज हैं। गो अहेड। The countries of further India, Pegu, Cambodia, and Champa were, it is pointed out, once colonies of Brahminical India, long before Buddhism came to these regions. Liiders hints at some difference between the secular and religious literature of India. He is emphatic that the history and secular literature does not in any way make India appear so alien and negative to life, as perhaps she might appear to be judged on the basis of
religious literature alone. In the above is to be found the recognition of the position of the positive background as well as of the futurism of young Asia. The same position has recently found another strong exponent in Helmut von Glasenapp, two of his papers in the Jahrbuch der Schopenhauer Gesellschaft may be referred to. One is entitled Buddha's Stellung zur Kultur, Buddha's attitude towards culture, and the other life affirming and life denying in Indian thinkers. The second has arisen out of a criticism of Albert Schweitzer's Die Weltanschauung der indischen Dinge. I think it translates as the worldview of Indian thinkers, in which the conventional idea of Orientalists is represented in the most extreme manner, namely that the worldview of the Indian thinkers is the ne to or denial and negation of life and is entirely different from that of the Westerns, which is alleged to consist in the ya or a to or affirmation of word and life. Von Glasenapp's review of Schweitzer's book is both critical and constructive. In the first place, he refers to the fact that during the first 1,500 years of Christianity, the world denying tendencies are strongly in evidence. During the Renaissance and the Reformation, also, they are described as important, especially in Roman and Greek Christendom. He doubts if it is possible to take these negative features as foreign to the real nature of Christianity. Then he goes over to the chief thesis, and in this connection, he examines the alleged life-denying ideas of the Indians in their working on practical life. To him, it is clear that in this respect, an essential difference between the life-denying Indians and the life-affirming Westerns does not exist. He points out to the fact that the political and cultural life of the country was not unfavorably influenced by the life denying worldview. It is, for instance, established by him that it was just during the period of unlimited influence of Brahmanism, Buddhism, and Jainism that political power, cultural affluence, and colonial expansion, or you can say cultural expansion, were at their height. He makes it a point also to bring out the fact that Buddha, Shankara, and other saints were described by the Indians as men who developed a great activity and who exhibited considerable understanding for the most varied spheres of life. The fundamental standpoint of von Glasenapp is to be found in his remark that the life denying feature is by no means so prominent in Indian spiritual life as one should conclude from the extracts in Albert Schweitzer's book. His logic is as follows. Should anybody, says he, use the works of mystics and the literature of monastic orders exclusively in order to exhibit the worldview of Christian thinkers, the report would with justice be objected to as giving a whole picture which does not correspond with factual conditions. The ascetic writings in India also can give but a fraction of her literature. Even the Buddhist literature, which was produced in the main to serve the purposes of monks, has references to works in which the world denying tendency is either not at all or very little represented. According to Indian view, moksha is only one of the four objectives of human life, the other three being love, kama, possession, artha, and the discharge of duties, dharma. A survey of Indian worldview, which should lay a claim to comprehensiveness, must therefore have to exhibit also those works of Indian poets and thinkers in which the Daseins find joy of life, thirst for action, heroic sense, worldly wisdom, practical philanthropy have found expression. The epics, the Puranas, the Jatakas,
and the poetic maxims uh, furnish many illustrations of these aspects. Finally, von Glasenapp refers to the existence of a whole series of philosophical systems in India from which ascetic thought lies remote. The Linga cult, Shaktism, and Krishna worship with its fertility rites point in the clearest manner to the fact that a one sided life denial never found a place in the sphere of religious belief, also. This is the final paragraph. In reality, therefore, life denying and life affirming are appraised as having existed alongside of each other in India. And these two elements have been taken as constituting an organic unity in Indian worldview. And this is said serve as much the metaphysical requirements as the practical life of the Indian people. Von Glasenapp's methods of analysis and conclusions find themselves in essential agreement with those of the present author developed between 1910 and 1922. That is all. If you guys have any thoughts on that, you can let me know. मेरा एक I विचार है, mean, the world in. मैं Just रखूं go क्या? ahead, Abhay, you you can go speak. ahead. हाँ हाँ, मेरा एक विचार है। You go ahead मुझे first. लगता है यही बौद्ध लोग मार खा गए कि बौद्ध लोगों का मोक्ष या निर्वाण पर ध्यान अधिक था। हिंदुओं में सदैव कहा गया कि काम, अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। अ, मैं भूल रहा हूँ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म और हाँ, काम यहाँ है। से ही समाज बनता है, मोक्ष और चार आश्रम का भी भेद है की भी बात की या जाती है हिंदू उनकी धर्म शास्त्र में। समाज की जड़। क्या बोल रहे हैं? सुना नहीं। हेलो। चार आश्रमों की भी बात की गई है धर्मशास्त्रों में। हेलो, am I audible? Um, हेलो। Abhay, I think your अभी आप go connection ahead. is going. हेलो। Hello. Unapologetic, you can speak instead. Yeah. So this thing of the denying of the world, Brahma Satyam Jagat Mithya. So I think Yes. in Shankara's view, like Brahma is everything. Like आई फील कि भगवान के परिप्रेक्ष्य में सब कुछ अनित्य ही होएगा क्योंकि भगवान ही केवल एकमात्र सत्य है। मेरे हिसाब से तो वो शायद इस दृष्टि से बोलते हैं कि केवल भगवान ही है जो कुछ है, बाकी सारी चीजें अनित्य है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? नहीं, इसका so the point here he is trying to make is that in the West they have the perception that Indians, all the Indian philosophies, they're just thinking about that the world is nothing and there is nothing to life. But there are आई मीन tendencies in our literature सी that do लाइक approve of life. ये एक्चुअली वी कैन से कि मैं भारत में आपको बहुत सुनाई दे रहा है? हाँ हेलो। हाँ, let हाँ, unapologetically talk, वही। then you can join again. हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। तो मैं क्या कह रहा कि उनने बोला कि वैदिक Yeah, धर्म you में, can बौद्ध continue. में और जैन में उसको जो विश्व है उसको डिनाई करने की टेंडेंसीज देखने को मिलती है। तो पूरी रूप से तो सही नहीं है क्योंकि जैसे हमारे उसमें चार चार उसका चार पुरुषार्थ हैं, फिर बहुत सारे हमारे आश्रम हैं, मतलब कि तो उस हिसाब से कहना तो सही नहीं है। चार फिर आश्रम। आप देखें कि जैसे कुछ कुछ तुम्हारे उसमें ऐसे भी दर्शन हुए हैं, जैसे कि आप कश्मीरी शेफ को देखिए। कश्मीरी शेफ तो ब्रह्म सत्य जगत सत्य चलता है उनका, कि ब्रह्म मतलब वो अद्वैत को मानते हैं और उसमें उनका जगत भी सत्य है कैसे करके। और फिर द्वैतवादियों के उसमें भी शायद जगत को सत्य लिया है। फिर बौद्धों में शायद जगत को बोला है कि वो इटर्नल नहीं है, जहाँ तक मेरे को पता है।
ये इटर्नल शायद नहीं बोला है उसमें, मतलब वो हीन यानियों में नहीं है और ना ही शायद महायानियों में है, उसमें शायद वर्ड को इटर्नल नहीं बोला है। हाँ और उसमें मतलब जहाँ तक मेरे को समझ में आया कि जो हीन यानियों का जो वो होता है कल्चर, उसमें तो जैसा कि भिक्षु बन जाओ, संघ में चले जाओ तभी मोक्ष होता है, तो वैसा कल्चर देखने को मिलता है कि जैसा उन्होंने लिखा है कि आप उनके संघ में जुड़ हाँ, वो जाओ। स्पेसिफिकली हीनयान में है। हाँ, हाँ वो स्पेसिफिकली हीनयान में। इनफैक्ट आप देखें कि महायान में तो गृहस्थ का कॉन्सेप्ट तो था थोड़ा बहुत, लेकिन तब भी उतना तो नहीं था जितना हिंदुओं में देखने को मिलता है। महायान में थोड़ा बहुत तो था, हाँ मतलब क्योंकि क्या है कि पूरे लोग है ना उसमें संघ में जुड़ जाए, वो तो मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। हाँ, वही और कि चार वर्ण भी बनाया तो अलग अलग धर्म हाँ, भी है सबका। और तो सबका अपना अपना स्वधर्म है कि जैसे ब्राह्मण का स्वधर्म है कि अपना वेद विद्या का वो करे, क्षत्रिय का स्वधर्म है कि रक्षा प्रदान करे, वैश्य का स्वधर्म है कि मतलब हाँ, कि अपना अर्थ करे, कमाए। शूद्र का है कि वह सेवा करे। धन कमाए। हाँ मतलब शूद्र का सेवा करे, मतलब वो तो स्वधर्म है, और धन तो मिलता ही है, धन तो सभी को मिलता है। अपने उसमें तो धन का तो वो हाँ हाँ अपन मना नहीं करते हैं, अपने उसमें माता लक्ष्मी की पूजा होती है, तो धन धन तो हमारे उसमें रहा है थोड़ा बहुत। तो आप भले ही बोल दें कि मोक्ष के लिए तो है ना उसको कामुक बोला गया है, लेकिन बाकी सारी चीजों के लिए तो सारी चीज हम लोग करते ही हैं। और बिल्कुल बिल्कुल। जैनियों के उसमें भी आप देखें कि शायद जो इनके जैनियों में गृहस्थ होते हैं वो लोग जनरली वेल्दी क्लास के होते हैं, आप आज के उसमें देखें तो। हाँ बाकी हाँ, इनके सन्यासियों को अलग कर दें ना, ये ऑथर ने वो भी पॉइंट चीज आउट तो। किया था। कि मतलब आप देखो ना, जैनियों जितने होंगे आपको वो अमीर ही दिखते हैं। हाँ इनफैक्ट आप उनके मतलब उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड इतना है कि आपको बहुत सी जगह पे तो आपको जैन फूड करके अलग से कैटेगरी करके मिल जाती है, भले ही वो केवल कितने 0.3% ही है भारत में। मतलब बिल्कुल। उनका हाँ, स्ट्रॉन्ग होल्ड, वेल्थ, मतलब उनके पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ वैसी है। और इसके ऊपर अच्छा, तो अपन किसी और के कोई विचार है इस पे? अभय? हाँ, मेरा यही कहना है कि बौद्धों का, जैनों का उतना नहीं कह सकता, पर बौद्धों का एसेटिसिज्म की ओर झुकाव अधिक था। हिंदुओं का एक सामाजिक धारणा थी, जिसके कारण हमारी जनसंख्या भी बढ़ी रही, हम लोग विस्तृत भी हो पाए, क्योंकि परिवार परिवार में संतान उत्पत्ति, ये सब हमारे धर्म का ही अंग, ये सब हमारे धर्म निभाने का अंग रहा है, ये कोई अलग नहीं रहा है हमारे हिंदू धर्म से, या हमारे हम्म, हम्म। जो भी मोक्ष को लेकर फिर बात अबे होती है। अबे ये चीज देखो कि जो बौद्ध है, इसलिए आप किसी भी देश में चले जाएं, बौद्धों का उधर के उस देश के किसी और धर्म के साथ जुड़ाव हो जाता है। कहीं पे भी वो एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के रूप में नहीं रखता। हाँ, जैसे कि आप हाँ, देखें, जापान इसका ईच बहुत को बड़ा अलग से उदाहरण रहते है। हैं। शिंटो और बौद्ध, जापानी लोग शिंटो अपने आप को बौद्ध हो दोनों गया, मानते हैं। कोरिया में भी 2 या 3 का मिक्सचर है, डाओ कन्फ्यूशियस बौद्ध, फिर चाइना में भी कन्फ्यूशियस डाओ बौद्ध, फिर म्यांमार में रुको, फिर तिब्बत में बॉन प्लस बुद्धिज्म होता है, म्यांमार में भी एक है ऐसा, रुक जाओ, मतलब उनका हमेशा कहीं ना किसी उससे मिक्स होके इनका आता है। केवल प्योरली उसके बेसिस पे मैंने किसी भी कंट्री में नहीं देखा है। अब जैसे थाईलैंड के अच्छा। कल्चर देखें तो थाईलैंड में भी हिंदू मिक्स हो रहा है, जैसे गणपति जी की पूजा वगैरह हो रही है, ब्रह्मा जी की भी हो ही रही है, तो वैसे मिक्स कल्चर आ, देखने को मिल रहा है। अच्छा। अच्छा, एक चीज जी। जो बोली गई थी, जो बोली थी अर्जी हिंदू ने बोली थी, तो हम्म, मैंने पढ़ा है द प्राइमरी टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म, हम्म, धर्मपद। तो उसमें बुद्ध ने खुद से बोला है कि हर व्यक्ति को संघ में नहीं आना है, आप हम्म,
बाकी काम करके भी पुण्य कमा सकते हैं। हाँ, तो अरे उनने तो ये लेकिन बोला बुद्ध है ने नहीं ना, बोला है। एक्चुअल क्या में बोला क्या है? है कि जो ट्रेडिशनल पोजीशन है बुद्धिस्ट की कि धम्मपद भगवान बुद्ध के ही वचन है, ठीक है। लेकिन हिस्टोरिकली आप कभी उस चीज को स्टैब्लिश नहीं कर पाओगे। जैसे अपन अपना ट्रेडिशनल मान्यता है कि भगवत गीता तो भगवान कृष्ण ने बोली। अब अपन उसको आप हिस्टोरिकली तो स्टैब्लिश तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ और अच्छा, धम्मपद की अपन बात कर रहे हैं तो धम्मपद में शायद एक जगह पे तो उस चीज के ऊपर भी आती है बात कि जो धम्मपद है उसमें शायद उनने तो बहुत सी चीजें, उनने तो एक पूरा शायद अध्याय ब्राह्मणों के प्रेजेस में भी लिखा है। बिल्कुल। तो पूरा मतलब वो ब्राह्मण सी वर्ग। तो जैसे हिस्टोरिकल तो मेरा द ये कहना है। हिस्टोरिकल हाँ, बोलिए एक बोलिए मिनट बोलिए। एक मिनट। तो द हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस टेक्स्ट वो तो पूरी तरह सिद्ध नहीं हो सकती है। पर एग्जैक्टली। अगर हम अगर हम मान भी लें कि धर्मपद जो है वो बुद्ध के शब्द है, उनकी वाणी है, तो अगर उसको मान भी लें तो बुद्ध ने कैटेगरिकली ये कहा है अपने वचनों में कि आपको संघ में तभी आना है जब आपको मन लेके, जब आपकी उस पर मन हो, या उसके आपको जैसे कि आप वेल्दी पर्सन है। हाँ। एवरीबडी शुड नॉट कम टू संघ जस्ट बिकॉज दे वांट मोक्षा। बुद्धा यस, हैड सेड दिस। हाँ, तो उस एक्चुअली हिसाब से यही तो बेसिस बना महायान होने का। जो महायान का जो मूवमेंट था वह इसी आधार पे तो ये लोग बोलते हैं कि हम लोग भी ओरिजिनल ही हैं, क्योंकि हीन यानियों में इतनी टेंडेंसी आ गई थी कि सबको संघ में जाना है, सबको संघ में जाना है, इसलिए इनको हीन यानी बोलने लग गए थे कि ये लोग खुद के उसके लिए करना चाहते हैं, सभी लोग अपने अपने उसका देख। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हाँ, अभय तुम बोलो मैं अब। मेरा एक मैं बस यही करना चाहूंगा कि अभी जो हिंदू समाज के साथ हो रहा है, मैं भी देख रहा हूँ कि जैसा आपने कहा कि जो स्पिरिचुअलिटी और जो क्या बोलते हैं परमार्थिक पक्ष है, एक व्यवहारिक होता है, एक परमार्थिक होता है। तो आज भी लोग हिंदू स्पिरिचुअलिटी में तो जा रहे हैं, जैसे योग और ये सब में। पर जो सोशल वैल्यूज है हमारे, जो ह्यूमन वैल्यूज है, जो सोसाइटी में, या जो जिसको आप बोल सकते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ हिंदुइज्म। पॉजिटिव मतलब ही जो मटीरियलिस्टिक हो या जो सोसाइटी में काम आए, वहां पर हमारे वैल्यूज खत्म होते जाए धीरे धीरे। जैसे परिवार वो को चीज लेकर तो जो है। हमारे वैल्यूज है। और मेरा मुद्दा ही यह है कि यहाँ से खत्म नहीं होंगे। यहाँ खत्म हो जाएंगे तो समाज बिखरेगा। जैसे हम वेस्ट में देख पा रहे हैं कि फैमिली सिस्टम उनका कुछ है ही नहीं बोलने के। आधे लोग डिवोर्स ही है, 25% बच्चे बिना पिता के बड़े हो रहे हैं। तो वो नहीं चाहिए। इसीलिए मेरा हमेशा सोशियोलॉजी पर हमेशा से ज्यादा ध्यान है जब भी मैं हिंदू दृष्टिकोण से बात करता हूँ। वही वही बात मुझे लगता है बिनॉय सरकार जो है वही बात मुख्यतः उसी पर उनका ध्यान है इस पुस्तक में, जैसा मुझे लग रहा है। जी। और किसी पे बिल्कुल। और किसी का इस पे विचार है? शेखर है या भूपेंद्र दा? नहीं, मेरे तो विचार मैं दे चुका हूँ, तो और किसी को कुछ और हम लोग ये स्ट्रीम अभी और हमारे पास 15 आधे घंटा होगा, तो वी विल एंड द रीडिंग हियर एंड देन वी विल टेक ऑडियंस क्वेश्चन। Sure. Should I stop sharing my screen? You are done with the chapters or you want to read little bit more? You can finish it. It is done because the Okay. chapter ended here. The next chapter starts after this. Okay. So we will take the next chapter in our next stream, and now we will take Yes. questions or comments whichever are there. Okay. I'll And stop people sharing my who want screen. to, you can keep the screen as it is. Don't need to stop sharing. Keep the screen as it is. Okay, okay. And there are a couple of questions. This is a comment. So let's take this comment. I don't know if MS has shared Sam Harris' version of objective reality. He also wrote a book on it
ओके, तो एक किताब भी है मेरे ख्याल से, जैसे बुक ऑल्सो रिटन बाय सैम हैरिस ऑन ऑब्जेक्टिव मोरालिटी, तो उस पर भी किसी चर्चा होगी। Yes, I think. पर ये अच्छी चीज है, तो एक्चुअली हमारा जो डिबेट वो तो पूरा नहीं हो पाया, शायद पूरा हो ना भी हो पाए, पर हम लोग टेड टॉक्स जो था आपके सैम हैरिस का, उस पर हम एक स्ट्रीम रखेंगे ताकि संपूर्ण तरीके से उस पर बातचीत हो सके ऑन दैट स्ट्रीम। ओके, सो मैं कमेंट्स ले रहा हूँ धीरे धीरे। लेट्स सी, देयर आर talking about black pill thing, so that we would not take. Okay, this is something interesting. Abhay, what is your comment on this comment by Nandish? Assimilation is not colonization. पर ओके, पॉइंट है बात में, पर मेरा इस पे एक डाउट है कि जो साउथ अमेरिका है, दे हैव बीन असिमिलेटेड इन अ वे, ठीक है, कि वो Wait, वो how they are, how they are, you have to explain how they are assimilated. मतलब उन्होंने सबने क्रिश्चियनिटी स्वीकार कर ली, राइट, No, ऑलमोस्ट। ओरिजिनल कल्चर no. बचा कहाँ फिर? वो तो कॉलोनाइजेशन है ना। हाँ, तो उन्होंने क्रिश्चियन कल्चर में अपने आप को असिमिलेट कर लिया ना। असिमिलेशन तो हुआ है, पॉइंट है उसी को तो वो कॉलोनाइजेशन बोलते असिमिलेशन हैं। कैसे कराया गया। Okay, hold on. असिमिलेशन बाहर वालों का होता है, जो वहाँ नेटिव्स का नहीं होता है। असिमिलेशन नेटिव्स में असिमिलेट होते हैं लोग। Inner and apologetic Hindu, आपको कुछ इस बारे में बोलना है on this specific aspect of assimilation is not colonization? मेरा इस पे अभी कुछ नहीं So बोलना I है। had a आप point. बोलिए। Can you see the screen now? It's black, so it is प्रॉपर है। black. It is black. It's loading. There is no text. Okay, there. unapologetic can speak. Let it load then. Okay, I have a point. So and Shekhar, do you have want to say anything else before I speak? नहीं, आप बोल लो। Okay, तो मेरा एक काउंटर पॉइंट है टू अभय's argument that साउथ अमेरिका में assimilation हुआ है where the native culture assimilated with Christian culture or ethics, whatever you want to say. Assimilation example can be the Balinese Hinduism that we see today in Indonesia, where the Balinese Hinduism tradition, their puja paddhati, is similar but not exactly what we follow in Bharat today. So the Hindu practices, tradition, scriptures were incorporated into the Balinese traditional society, traditional traditions they had. So their local deities and traditions were merged with the Sanskrit or Hindu traditions, and it created a hybrid kind of culture where both coexisted. So Hinduism co-opted some traditions, deities from Balinese local religion, and they also assimilated or imported something from India. So it became a hybrid kind of Hinduism practice. In my opinion, that is how assimilation works, where you incorporate, intermingle, and create something which is a little bit different from the original one. So, nor it is 100% Indian way of worship, nor it is 100% Balinese way of worship. So, that is, in my opinion, that I would call as assimilation. Abhay. Bhupendra da, I've shared my screen. Can you share it? Let me hold on. ओके, असिमिलेशन, हाँ, आई थिंक भूपेंद्र दा इज करेक्ट हियर, बट मतलब एक है, जैसे कोई हिंदू मान लीजिए अमेरिका गया और उनको कन्वर्ट कराया जा रहा है, सो इज दैट असिमिलेटिंग देम? No, absolutely not. नहीं, एसिमिलेट नहीं होता वो क्या बोलते हैं उसको, एक स्पेसिफिक टर्म है इसके लिए,
वो होता है ये एसिमुलेट नहीं होता। एसिमुलेट होता है कि आप दोनों का कल्चर घुल मिल जाता है। बेसिक जो कल्चर है ना जहाँ रह रहे हो वो सही रहता है। जैसे अमेरिका में यहाँ से जाओगे तो अमेरिकन कल्चर रहेगा ना, वो बेस कल्चर रहेगा, ठीक है, उसके ऊपर आप बिल्ड कर सकते हो, वो रहता है एसिमुलेशन। ओके, तो फिर वहां पर आपकी हिंदू आइडेंटिटी भी रहती है आपके? हिंदू आइडेंटिटी है जो इंडियन हाँ हेरिटेज हाँ की आइडेंटिटी है। हाँ, हेरिटेज जो है आपके कल्चरल और जो सोसाइटल नॉर्म्स है ना, वो ज्यादा चेंज नहीं होते हैं। सोसाइटल हो सकते हैं, कल्चरल नॉर्म्स चेंज नहीं होते हैं। ओके ओके। ओके, सो आरएस ने एक चीज लिखी है यहाँ पर जो काफी इंटरेस्टिंग कमेंट है कि कॉलोनी इज इक्वल टू सेटलमेंट plus destroying native culture plus oppression of natives. You can put it as the way I think. So, colony or colonization, which we saw when the Europeans were sailed out of Europe and invaded Africa, South America, and Asia. So, as per RS, it's a settlement destroying native culture and oppression of natives. So, इस कॉन्टेक्स्ट में कॉलोनी इज द वर्ड इज यूज। तो और जो हम लोगों ने नहीं किया, फ्रॉम वियतनाम टू फिलीपींस टू साउथ ईस्ट एशिया, वी हैव सीन द इंडियन कल्चर amalgamate itself with the local traditions and created something which is a syncretic culture which had good, maybe bad things of both the Indic heritage and also the local heritage of they had. So that's why I see the mode of worship is very different, even in within India. Within in India, uh, Shakti, Ma Durga, is worshipped in East India, where you can consume non-veg food. Same Ma Durga is worshipped in Gujarat, where they don't consume any non-veg food. So mode of worship, culture, and tradition would adopt the local tradition, but the Shakti worship goes on. But the mode of worship and culture tradition would transform as per the local tradition, as per local society itself. हम्म, Okay. किसी किसी को हाँ बोलना है तो Brother, बोलो. can I you will. share my मैं screen? I एक will give you अपना one example. Can you share my screen? Yeah. I am So we doing. will, yeah. So you can see this is Kushan Empire. We are in 2nd century AD. As you can see from the map, it is mostly in Afghanistan, Pakistan, and eastern Punjab, Haryana side, and parts of Rajasthan. So here, what do we find is an example of assimilation. We know that the Kushanas were not Indic rulers or have Indian origin, but we do see is what we see is like assimilation, like the deities, Kushana deities, for example. He had the Iranian deities like these, and then he had the Greek deities, and then he had the Indic deities. Like you can see, all different kinds of deities were being worshipped in his region, like in that region. So it is an example of assimilation where various deities from Greeks, Iran, and India, they were all being worshipped and they were given a place. Whereas if it was a colonialism, he would have imposed only say this particular branch over the all the other existing ones. This is how I understand assimilation versus colonialism. Do you have The any comment other on it? one is integration actually. They integrate the colonization does is you integrate your social norms and cultural norms on the natives. So you integrate them in your culture rather than you assimilate in their culture. Okay, so this is an example of integration. Okay, I thought this is an मैं example of मैं assimilation. बस अपना That was ये मैं assimilation पक्ष only. That example was Okay, so I assimilation was only. correct then. Okay. मैं बस अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरा ये सब प्रश्न पूछने का उद्देश्य किसी को ऐसे
कोई भसंड फैलाना नहीं है। मैं बस ये सारे प्रश्न क्योंकि वामपंथियों द्वारा पूछे जाते हैं और ये सारे आरोप कॉलोनाइजेशन के हमारी सभ्यता पर भी लगाए जाते हैं, ये कहकर कि यदि अंग्रेजों ने इन्वेट किया तो चोलाओं ने भी तो इन्वेट किया था, तो क्या अंतर है उसमें? तो इन सब को लेकर लोगों में स्पष्टीकरण होना चाहिए कि हम जब इन प्रश्नों का उत्तर दें तो स्वयं न उलझ जाएं। बिल्कुल क्या बिल्कुल, आंसर हम बहुत ही यहाँ सिंपल है, डिबेट कर रहे हैं। सिर्फ दो ही ऑप्शन है, दो ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। कॉलोनाइजेशन और इसमें जो कोई भी दूसरे तरीके का एक्सपेंशन होता है उसमें फर्क करने का। पहला कॉलोनाइजेशन मिलिट्री होता है, मिलिट्री एक्सपेंशन होता है। अगर मान लो कि सिमिलरिटीज है जैसे चोलास के केस में, तो दूसरा ऑप्शन होता है सोसाइटी का डिस्ट्रक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। सोसाइटी का डिस्ट्रक्शन हुआ है और मिलिट्रिस्टिक एक्सपेंशन से हुआ है तो वो कॉलोनाइजेशन बोल सकते हो आप। ये मेन ओवरव्यू है, बाकी अंदर और बहुत सारे कारण होते हैं, पर ओवरव्यू इनसे डिस्टिंक्ट कर सकते हो चीजों को। अच्छा, एक और शब्द है जो मुझे याद आया। assimilation can also be defined as reciprocation. So both the culture which comes into a geographical area and the culture we is already there, they reciprocate each other and create something which is unique in their own way. So assimilation also can be a kind of a reciprocation where both the communities, both the cultures interchange each other and create something new. अच्छा, मुझे एक चीज दिखानी थी। तो ये जो किताब है, दिस इज द बुक, और इसमें जो चैप्टर्स है वो काफी इंटरेस्टिंग है। तो मैं चाहूंगा कि जो भी ये स्ट्रीम देख रहे हैं, ठीक है, दीज आर द चैप्टर्स यू कैन एक्चुअली रीड इट। एंड काफी इंटरेस्टिंग है संजीव सन्नल जी का राइटिंग Bring it ऑन दीज closer. थिंग्स। Bring it a bit closer, या, brother. कैन यू रीड नाउ? इज इट रेडी? Yeah, better. I बेटर? think we सो should make others on side and you on center's frame. That yeah, not a problem. Yeah, you So can do that. I think people got it. People got the thing. So it is very important that the writings which are written by Mr. Sanyal from 2008 onwards, those are very kind of a evolution of a human being, of an economist who now has trying to portray and create awareness about the Indic way of culture, economics, and try to portray them in proper context. तो उस हिसाब से ये जो किताब है ये काफी इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में काफी आसान होता है इसको पढ़ने में। ज्यादा कुछ अंग्रेजी के शब्द भारी भरकम नहीं यूज किए गए हैं। तो उस हिसाब से मैं चाहूंगा कि जो भी ये स्ट्रीम देख रहे हैं वो इसको पढ़ने की कोशिश करें, और शायद हम लोग भी एक काम करेंगे इस किताब से। एक स्पेसिफिक जो आर्टिकल है जो मैंने पढ़ा है उसको लेकर एक डिबेट करेंगे पिछले हफ्ते, अगले हफ्ते करेंगे। इसके अलावा और कमेंट्स तो मुझे कुछ नहीं दिख रहे हैं। किसी को और अगर कुछ कहना है तो यू कैन से एंड देन वी विल एंड दिस ट्रिप। आई थिंक आई हैव टेकन ऑल द क्वेश्चंस एंड No, I कमेंट्स have फ्रॉम nothing to say. देयर। Yeah, I have अभय, nothing to say. You can. ओके, अभय, डू यू हैव एनीथिंग टू से बिफोर वी साइन ऑफ? नहीं दादा, बस धन्यवाद कहना चाहूंगा। ओके, सो one more thing before we sign off, I have to share something. Yes. तो हमारे जो गेस्ट हैं उन अनअपोलोजेटिक हिंदू, उनका एक चैनल है। तो सबसे ये विनती होगी, रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब हिज चैनल। ही हैज सम गुड कंटेंट स्पेसिफिकली ऑन बुद्धिज्म एंड कंपैरिजन ऑफ बुद्धिज्म विद हिंदू ट्रेडिशन। तो काफी अच्छा कंटेंट है और वो भी हमारे पास भी आते रहेंगे। एंड हमारा एक स्ट्रीम आने वाला है, कोलैबोरेशन बिटवीन द चैनल अनअपोलोजेटिक हिंदू एंड नववीवर्स। वो नेक्स्ट 8 दिसंबर को होगा, 8 दिसंबर 8 PM to 10 PM Sunday को. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। या संडे को 8 दिसंबर। yes, 8 December. या Sunday, 8 8 दिसंबर। December.
Sunday at 8 p.m. to 10 p.m. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो आप जरूर उस पर जुड़े। उस पर हम बहस करेंगे भगवान बुद्ध को लेकर, बुद्ध के जो अवतार थे। तो वो काफी अच्छी डिबेट होगी, उस पर आप भाग लें और जरूर आप सब्सक्राइब करें अनबुद्धिक हिंदू चैनल को। तो आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, चीजें सीखने को मिलेंगी। तो इसके साथ हम Thank you आज for का promoting my channel, sir. Thank you for yes promoting my channel. no, we will be promoting. We will be promoting everybody who comes to our show, and we will also be live streaming. So the next live stream we will have on your channel as on my channel. So Okay. everybody should see it. So we'll make the arrangement, not a problem. I'll make sure that happens. Yes. So thank you, guests. Thank you, Nina. Thank you, Anabhajik Thank Hindu. you very Thank much. you, Abhay. Thank you, Shekhar, Thank for you. coming. बहुत बहुत धन्यवाद सबका। And बहुत बहुत धन्यवाद। तो जय श्री राम, वंदे मातरम। फिर Jai मिलेंगे Shri हम Ram. Jai Vande Shri Ram. Mataram. शुक्रवार को। धन्यवाद। जय श्री राम।